that he is sagacious, righteous, non-profligate. Even the greatest saints in Islam were scared when they were dying, that they were scared of death because they were apprehensive of what may be meeting in the hereafter. So I don't know, is this generally a wish list kind of situation as opposed to because otherwise everybody can, if I was filing a nomination paper and if someone says he's not of good character, I would not even challenge it. I said, I'm sure I've done something wrong in my life. Maybe I've done it wrong yesterday, so I don't know. So if you're honest and you say, right, his person is right, I am not sagacious, righteous, non-profligate, honest. I do not switch off the lights when I go out of a room. I waste electricity. I waste human resources which the Almighty provides. So where does it end then? I can bring any case into disqualify someone, and I want to save someone, I can also do the same thing. That's why. Should such power vest in judges who are themselves humans? That's why they want a greater test for parliamentarians than they have for themselves. Does this language find mention in the oath of office of a judge? That I'm not profligate? Does it mention in the recommendations of a judge? All it says you have to be 45 years of age, practicing law for 10 years. It could be so we have a lower standard than parliamentarians. Why is this language then not reflected there as well? Let's accuse ourselves before we accuse anybody else what they are or what they are not. So either we have a much lesser test, we can't, at least I would be very scared to meet this test, terrified to meet this test. So either we don't have a similar test. So we have to read the Constitution as a living whole, and where the Constitution has brought down the acts, it clearly says 2 years, 5 years, 3 years, 2 years, or it's factual, you're not a citizen, fine, that's very clear. There is no punishment here, but you're out. So without a punishment, you're out. There's no punishment. So, but suppose a person is a citizen of Pakistan, not a Pakistani citizen, but becomes a citizen of Pakistan later. Would he stand disqualified for life? Suppose he filed a nomination paper and he had another nationality or whatever, and he got disqualified. Is it disqualification for life? And then subsequently he said, okay, I've surrendered my US nationality and now I want to contest. So I don't know, we have to read it in a way that is meaningful. And we must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. He wasn't a graduate. Amendment कब हुई? ये amendment 2002 की 8 की 2002 में किसने की amendment? This is presidential order. क्या वो president खुद इन पे उतर सकता था, इन तमाम requirement पूरी कर सकता था? Military General Ziaul Haq नहीं होते, बाद में डिग्रीज करते हैं, शुरू में नहीं होते. Non-elected members अगर amendment करेंगे तो यही होगा. Mr. Attorney General, the question is that while we're looking at D, E and G, which to my mind appears to be a guideline for the voters, the actual gatekeepers, and they might keep this in mind when they're voting because nobody can execute them and put anybody behind anything. So D, G, E and G to sir guideline ho sakti hai voters ke liye, and that's never been agitated. The $1 million question is, how do we look at the line, no declaration to the contrary by a court of law? What do we do with this? This is in the Constitution. If I may, I think my lords have raised the questions. Can we read the law on declarations? What is the law on declarations? Section 42 of the Section 42 of the Specific Relief Act. I would imagine, is that the only declaration that has been indicated here? There's no other declaration. और तो कोई है नहीं. कोई और law होता है declarations का? Specific Relief Act. Only Specific Relief Act, Section 42. Legal character के ऊपर जो है ना, वो that is the only law. Declaratory suits are filed under 62 one है. Section 42. Constitution में रहा. ये तो इन्होंने कर दिया ना, बट अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो तो 42 में ही करेगा. Negative declaration. Negative declaration concept है ना. Positive declaration is not negative declaration. We have held in paternity cases that you cannot do negative declarations. Paternity can.
किया ना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं बेटा नहीं नेगेटिव पॉजिटिव हाँ नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या पर्सन रेगुलरली कैरेक्टर राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी दे देना इनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर आप अटॉर्नी जनरल को दे देना कह सकता हूँ कि हम ऑनेस्ट यही दे देना प्लीज ये मैं दावा फाइल कर सकता हूँ कोई झूठा नहीं ऑनेस्ट Yes. Ji. But that's Ji, sir. I have it before me. Mr. Jilani's iPad is very helpful. Discretion of court as to declaration of status or right. Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. Bar to such declaration, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so. By the court, to what is understood by court? A civil court? Yes. Under Section 9, or is it a constitutional court? Now this is it's a civil court where evidence can be led, witnesses can be examined, where a burden of proof is discharged, and then there is an opportunity of rebuttal. Suppose in a case where I've done so even, we observe hearing a civil petition for leave to appeal or an appeal that the appellant had dishonestly filed a suit. Suppose we hold that and we've held so and impose costs on him. Will that constitute a declaration of a court of law in terms of Article 62(1)(f)? My respectful submission is no, sir. Why? Because you are not a court where that particular issue is actually conclusively determined through a trial. So we could observe in other cases. We could say in a criminal case that I don't believe this witness is a liar. And that witness will then be struck by 62(1)(f) because it's a declaration of a court of law. In a judgment in a criminal case, he was not an accused there, but he was a witness. And the court says, I don't trust this witness. I found him to lie. Yeah. My lord, so it's, then you can bring out every case. We may make an observation against a lawyer. He misled the court, for instance. Sometimes we do that. My lord, regretfully. And then if a lawyer contests election, the person will say, you have held that he misled the court. He is, of course, how can you allow him now to contest an election? He's banned for life. My lord, now... जी साहब एक चीज और देख लीजिए डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोवाइडेड है ना वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 1 में वो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स हैं सूबे और वफाक के दरमियान जो झगड़े होते हैं ना उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट उसके अलावा के डिक्लेरेटरी जजमेंट 184 और 185 में लिखा हुआ है No, 184.3 is not mere declaration. I mean, 184.3, the court goes on to conduct... शहजाद शौकत साहब यहाँ बैठे हैं जो सिविल कोर्ट के माहिर हैं तो आप बताइए ना ये वाली डिक्लेरेशन कैसे होगी दो चीजें ऐड कर दूं बता दें आप सपोर्ट कर रहे हैं लॉ को या अपोज कर रहे हैं लॉ? I am supporting the law. The law. I am against. We want to hear from those who are opposing the law. There's none. So then there is somebody who said yes. Then hear him out. I am opposing this. So, yeah, I think in the course of proceedings... Let's hear, I just want to understand how the opposition is. That's right. जी बताइए आप अपोज कर रहे हैं तो पहले ये बताइए कि इसको चैलेंज किया है मतलब मैं लॉ को इस बारे में अपोज कर रहा हूँ नहीं पहले बताइए कि अगर है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया वायरिस को इसकी आपने मैंने तो चैलेंज नहीं किया तो फिर अब क्या अपोज करेंगे हम गुजारिश ये मालूम क्योंकि समीउल्लाह बलोच केस अगर मौजूद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है अपने सामने इसीलिए तो आपसे पूछा ना समीउल्लाह बलोच है उसके बाद आप समझते हैं कि लॉ गलत अमेंड हुआ है 232 गलत आ गया है तो वेदर यू हैव चैलेंज द वायरिस इन द हाई कोर्ट और नॉट that can be challenged before this proceeding my lord because that question is just alive before the honorable and the same notice administration on that question and in this proceeding this honorable court has every authority to declare the law
which has been passed in violating the provision of the Constitution or जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62 ते ताहियात नाले केस जी ॿुधणी जारी आहे। नाज़रीन, ही हुई हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थींदासीं हेडलाइन सां गॾु। ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज, मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज, मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। हिन हेडलाइन लाइ असां 57 कयो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62 तहत ताहियात नाले केस जी ॿुधणी जारी। ताहियात नाले जी तशरीह वारे फ़ैसिले जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे। अटॉर्नी जनरल अदालत खे इस्तदा कई। तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे? इलेक्शन एक्ट हलणु घुरिजे या सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो? चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी सां अटॉर्नी जनरल खां सवाल कयो। असां इलेक्शन एक्ट जी तायद करियूं था, छाकाणि त इहो वफ़ाक़ जो ठाहियल कानून आहे। अटॉर्नी जनरल जो जवाब आहे, समूरनि एडवोकेट्स इलेक्शन एक्ट में तरमीम जी हिमायत करे छॾी। लॻे थो चूंडूं रोकण लाइ टैक्स चार्ट इस्तेमालु कया पिया वञनि। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी सां जा PK 91 जे रिटर्निंग ऑफिसरनि खे पेशावर हाई कोर्ट खां मुअतल करण ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जी अपील ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस चयो आहे त इलेक्शन कमीशन को बि गैर कानूनी या गैर आइनी क़दम नाहे खयो। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर ते स्क्रूटनी जो अमल शुरू करे। असीं सम्झूं था त हर इदारे खे पंहिंजी हदनि में रहणु घुरिजे। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी साजा सुप्रीम कोर्ट में गुम थियल माण्हुनि ऐं जबरी गुमशदगियुनि जे केस में ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस जो चवणु आहे त गुम थियल माण्हुनि जे केस खे सियासी मक़सद लाइ इस्तेमालु करणु न ॾिनो वेंदो। हीउ केस संजीदा नोईअत जो आहे। हू अदालत जो मज़ाक़ बणाइण जी इजाज़त न ॾींदा। गुम थियल माण्हुनि जो मसइलो उन वक़्तु हल थींदो जॾहिं सभु ज़िम्मेवारियूं निभाइनि। $70 करोड़ जी किस्त लाइ पाकिस्तान जी IMF खे समूरनि शर्तनि ते अमल करण जी ख़ातिरी। नाणे वारी वफ़ाक़ी वज़ारत जी निगरान वज़ीर डॉक्टर शमशाद अख्तर ऐं स्टेट बैंक जे गवर्नर IMF खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हुकूमती इख्तियारनि जो IMF जे सभिनी शर्तनि ते अमल करण जे अज़म जो इज़हार। IMF जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड 11 जनवरी ते वाशिंगटन DC में घुरायल इजलास में पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते वीचार कंदो। इस्लाम कोर्ट पेचो 16 वरियें जी नीगरीअ जो फाव ॾिनल लाश कोर्ट सिंधार विकिया में कोशलिया मिगवार जो वण में टंगियल लाश मिलियो। पुलिस लाश खणाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भलीकार हम मारवी थे ऐं आऊं आहियां दुआ भुट्टो। नाज़रीन हेडलाइंस वॾिटियूं हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आया हूँ जी होस्ट सरवर जबीन। प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार एहसास यादुनि सां आहे। ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी, त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां, तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाकी इस्लामाबाद वठी हलंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहिलीअ केस जी ॿुधणी जारी आहे। Not in, who have you filed it for? For Mr. Jahangir Khan Tareen, my lord. Okay. Now, one thing which nobody has attended to yet, at least one way of interpreting the Constitution is what the original Constitution said. And this Constitution has been, I don't know what's the correct word, changed or ravaged from time to time, what you want to use it. Can we read the original Constitution as it was enacted in 1973? My lord. And see what the Constitution then said? My lord, I will read that provision to your lordship. That would you like to do it, or shall we ask the Attorney General to do so? As your lordship pleases, the history is... No, we were thinking of appointing you as amicus, but you are representing a party, so anyways, let's... as your lordship pleases. Nahi, padhe 62, do you have the original Constitution? Yes, my lord, I have, and the history is traced in Samiullah Baloch. No, we want to read the actual text. Yes, my lord. The text is there. 85. Yeah, we have it, my lord. Qualifications for membership of parliament. Can you come to one of the other mic? My lord, benefit of... My lord, Article 62, there used to be only 3 qualifications. One, he is a citizen of Pakistan. Read the whole article. My lord, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of parliament unless he is a citizen of Pakistan. B, is in the case of the National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll for the election to that assembly.
C, he's in the case of the Senate, not less than 30 years of age and is enrolled as a voter in any area in a province, or as the case may be, the federal capital or the federally administered tribal areas from where he seeks membership. And D, he possesses such other qualifications as may be prescribed by Act of Parliament. So these troublesome provisions were not there? No, my lord. When did they come into? My lord, by Presidential Order number 14 of 1985, which is also called the Revival of the Constitution Order. This is General Zia. General Zia, when the martial law was coming to an end and partyless elections were soon to Is it ironic that a person who violates the constitution of the country puts in these conditions? I find that a bit troublesome, isn't it? Yes, he after D... Was he of good character? If he violates the oath that he took to uphold and protect the constitution, and he destroys the constitution, it's very ironic for me that he inserts a good character, knowledge of Islamic teachings. I wonder which knowledge of Islamic teaching mandates judges to be sent home because they don't swear an oath of fealty to the martial law administrator. What is your view on that? My lord, these are, with great respect, all these provisions which have been added by the RCO or the Presidential Order 14. Was he non-profligate? My lord, these are matters which I would say... Yeah, we want your answer on this. My lord, these are matters for divine judgment. These are matters for divine judgment. You mean to say matter of treason is for divine judgment? My lord, no. And treason is not an issue, but if we come to treason, then in martial law is admitted? Yes. If it comes to an act of treason, then in that particular case... Do you think he committed treason or not? My lord, in your lordship is talking of 1977. You're talking about, yes. Your lordship will then have to examine it. We are asking your opinion. My lord, I would be bound by the judgment of this honorable court. We are asking your opinion. My opinion is different, but the judgment of this honorable... Share your opinion with us. The judgment of this honorable court in Begum Nusrat Bhutto's case takes a different view. चले आप नहीं बताना चाहते रहने दें फिर. My lord, my view... चले बाकी पढ़ लेते 63. तो ये D तक था. There was no present D, present E, present F and present G. Yes, my lord. The D... and 63 was also pretty succinct. Yes, it was, my lord. 63 was also very limited. कैसे उसमें हम पढ़ लेते हैं यही समझ तो बात ये सारे नहीं ला सकते ना My lord, 63, a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of parliament if A, he is of unsound mind and has been so declared by a competent court, or B, he is an undischarged insolvent, or C, he ceases to be a citizen of Pakistan or requires the citizenship of a foreign state, or D, he holds any office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holder, or E, if he is so disqualified by Act of Parliament. So it was pretty straightforward and simple. It was. And RCO kind of molded the constitution. Yes. RCO changed it in two respects. It brought in these qualifications and added a whole host of disqualifications as well. By a person who was of sagacious, righteous, non-profligate, honest and good character. Yes. Yes. But the point is, 18th Amendment stamped on it. You see, my lord, 8th Amendment stamped on it. No, देखिए, and then 18th Amendment. Mr. Makhdoom Ali Khan, at least now I will speak for myself. I don't know. Wherever this is one way of interpreting the Constitution, and I've held it in a judgment or two, that wherever there is problem areas or difference of opinion or two interpretations possible, at least I've chosen the one interpretation which found mentioned in the original pristine constitution chosen by the directly elected representatives of the people and not martial law administrators. Why are you so scared of martial law administrators to utter these words, Mr. Makhdoom Ali Khan? My lord, may I submit that this is also the jurisprudence of this court
In Al-Jihad case, Mr. Justice Ajmal Mia took the view that if there is a conflict or tension between two provisions of the Constitution, one which was enacted at a time when the Constitution was in abeyance and other at the time when the Constitution was in full force, it is the latter which will then prevail, and that view has been reiterated in Samiullah Baloch, though the principles drawn from it thereafter are different. So what your lordship is observing. So where is it mentioned in Samiullah Baloch? My lord, in the Samiullah Baloch case itself. No, I just want to read that part. Yes, my lord. Your lordship will see the constitutional principle is identified in the Samiullah Baloch case itself at page 435. Page 435. At this point that you are saying? Yes, yes, my lord. This point is there on page 435. This is PLD 2018 Supreme Court 405. Which paragraph are you reading? Paragraph 22. G. If your lordship will see, there are a number of judgments cited, and then it says reference by the President, PLD 1957, Supreme Court 219 at 235. As such, the Constitution must be interpreted as a whole because it is an organic document that is meant to apply to the changing circumstances of time and space. Consequently, each provision of Constitution or part thereof has purpose, meaning, and integral place that must be understood, acknowledged, and applied harmoniously. It is only when a conflict between two provisions of the Constitution is irreconcilable and one of such provisions was inserted when the Constitution was held in abeyance, then the provision which was made part of the Constitution during the period of its abeyance would yield. But would it apply because after the 18th Amendment having stamping it, so it's not really, that was a democratic dispensation at that time. My lord, it was, but your lordships prior to this also in Al-Jihad's case took the view that in spite of the fact that whatever General Zia had done had been validated to a large extent by the 8th Amendment to the Constitution, this honorable court took the view that, and that was in particular, my lord, in relation to a provision where a judge of the High Court declined to go to the Federal Shariat Court and was as a result sent home. Their lordships took the view, particularly Mr. Justice Ajmal Mia, that this provision was inserted at a time when the country was going through a period of constitutional abeyance. No doubt it was validated by the 8th Amendment, but if when we examine it and juxtapose it with other provisions relating to judiciary, this having been added at the time cannot be allowed to hold sway, and that is why their lordships held that a judge of the High Court cannot be sent to the Federal Shariat Court against his will, and if he refuses, will not cease to hold the office of a judge of the High Court. So, in spite of that, this has been the jurisprudence of this honorable court, that in spite of the validation. Mr. Makhdoom Ali Khan, but would you put validation at par with an original enactment which has been thought about, carefully considered by every member of parliament? A validation was also a bitter pill for the parliamentarians to swallow. If you don't validate, I continue. So it may be that, okay, we are getting something, is better than nothing, let's at least get on with it. But we are now faced with a problem. So simple validation, when the original constitution said something else, if there are two possible ways to interpret something, and more so when what has been added is very ambiguous. I don't know why these vague words were introduced. You could have simply said A, B, C, D, like every other thing is factual. Either it's a yes or it's a no. Are you all of good character? Please don't answer this question. But which person would say this? I mean, it would be a very audacious person who would say, I'm honest, Ameen, and everything. And then probably he will be making other claims which will be totally not permissible. So simple validation is a bitter pill which has been swallowed from time to time to get democracy back on the rails. Would you not agree with that, since we consider you a
constitutional expert to consider validation at par with a constitutional provision, or it has to be read in the context of, because this judgment also says in space and time. The space then was a dictatorship. Either you continue another 10 years of a dictator or get some sort of a diluted form of democracy, get us back on the rails, whichever is better. So probably the parliamentarians, we should not always condemn the parliamentarians. We should see the difficult circumstances that they work under. I mean, we should respect them. And what would you have done? Let's put yourself in the position of parliament, make yourself a parliamentarian then, that you would, validate something which you may not be very happy with, but at least get the business back on track. How would you personally attend to it? My Lord, my respectful submission is that though the earlier two judgments which I have just identified by this Honorable Court do not put it in the terms that your Lordship has, but that was probably at the back of their mind when they said that an amendment made during the period of constitutional abeyance, if it is in conflict with or cannot be reconciled with the provision originally enacted in the Constitution, then the latter will prevail. So obviously this Honorable Court has not treated the validation at the same level as the original Constitution, recognizing all the difficulties which your Lordship have articulated, but not articulating them in this particular manner. Otherwise, my Lord, if any amendment made to the Constitution, eventually when made, stands on the same plane as any other constitutional provision, but your Lordships have held that we will distinguish between constitutional provisions made during a period of constitutional abeyance. What's your main argument? Is this your mainstay of your argument? My Lord, my main argument in this particular case would be that insofar as when your Lordship examines Article 62 and 63, because some of these amendments, as your Lordship has just now noticed, came in at the same time, there is a relationship between the two. And with great respect to this extent that Samiullah Baloch says that 62 and 63 have to be looked at through different lenses, it is with great respect incorrectly decided. Because when your Lordship looks at 62 and 63 and the amendments came about at the same time, 62F, which your Lordship is looking in particular, which says he's sagacious, righteous, non-profligate, honest, and Amin, there being no declaration to the contrary by a court of law, and your Lordship examines it with 63(1)H, he has been on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. They are to be read together. I mean, that is dependent upon 62 is dependent upon 63. 63, and I would go to the extent of saying that when your Lordship looks at G, for instance, he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. It has to be related to H, which says he has been on conviction for any offence involving moral. So what does that mean? I mean, where does that leave these provisions 62? My Lord, what's the effect? My submission would be that unless there is a conviction, and that would be the declaration I would be seeing, not at... So what are these clauses? They go. My Lord, if there is no conviction, then in case of D, F, E, and G, for example. My Lord, D and E and F probably all will have to be related to H. 63(1)H. F actually talks about a declaration. D, E, and G don't. They could be. One could argue that because there is no third-party declaration, we can go into conviction area. But where do we take the declaration part? My Lord, declaration. Now, if your Lordship looks at it in terms of section. One thing which immediately comes to mind is section 42 of the Specific Relief Act, which talks about declaration of a legal character. Now,
this cannot be that kind of a declaration because, as your lordships have repeatedly observed, a negative declaration is impossible to obtain. Then your lordship, sometimes permissible, negative declaration is permissible sometimes in some events that can be granted by the court. There has been some revisitation of Alvi Sons, but otherwise that remains good law. Then if your lordship looks at 199, that also is talking of declarations being made by this honorable court, but that's in a completely different context. That is only. So then what do you make out of this declaration for a court of law? My lord, I would say that the term is not used specifically in the section 42 sense of the term. Maybe it's a constitutional declaration. It's a constitutional declaration, and that the declaration which the constitution is envisaging is there has been a conviction already under 63(1)(h). And then there is this gateway. He cannot file his papers before the returning officer because at that time the returning officer may refuse to accept them. But the anomaly which arises when your lordship looks at 63(1)(h) in particular, and G and H both, actually, when your lordship looks at it, for instance at H, he has been on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. So even a conviction which is followed by a sentence of 1 year 11 months does not lead to disqualification even of 1 day. Fair enough. So that's understood. So therefore the connection which Samiullah Baloch makes between a person being an ex-convict suffering all his life the stigma that he's a convict is really not what 63(1)(h) is all about. 63(1)(h) is all about sentencing. If the person has been convicted and sentenced till the rising of the court, he's not disqualified at all. No, but there is a difference, you see, the opening paragraph of section 62 and 63. They need to be read and harmonized. A person shall not be qualified to be elected or chosen. I mean, if you will read 63, a person shall be disqualified from being elected or chosen. So वो जो उसमें चीजें लिखी हैं वो आफ्टर कन्विक्शन है कि अगर कोई कन्विक्ट हो गया है उसकी सजा खत्म हो गई है तो इस इतने पीरियड के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है. To be elected and from being elected. This is the correct. But if your lordship may graciously be pleased to look at clause 2 of 62, these words are used very loosely. The disqualifications specified in paragraph D and E doesn't talk about qualifications. Article 62. But both are dealing different situations. No, my lord, Article 62, clause 2, is talking of disqualifications under 62. It's not talking of qualifications. So this is very loose language which has been used. Practically interchangeable. Interchangeable language. Because one question which I have. DE does not have the wording there being no declaration to the contrary by a court of law. My lord, yes. When does D, E and G kick in? How can they ever kick in actually in any court of law? They cannot kick in. Or they're meaningless words. My lord, they're just guidelines. They are exhortatory perhaps for the guidance of the electorate that watch out for candidates. So first of all, you are saying that they are of no, there are no consequences which follow with D, E and F. D, E and G. They will, my lord, D, E. But ideally, the same wording should have been used, there being no declaration to the contrary by a court of law in D, in E and in G. My lord, these wordings are only found mentioned in F. My lord, these were added in F under the 18th amendment. These words were originally not there. And the reason for adding it appears to be, as the Attorney General identified, that under F, returning officers had started disqualifying people by saying, "Aap chautha kalma zara suna dijiye." आप चौथा कलमा जरा सुना दीजिए. इस तरह की चीजें They can still do that in E. They can. They very much That's can. the problem, you see. What we don't understand is D, E, G are there, and what do we? They're not executable as such. How could we? So I mean,
myself read them as for the gatekeepers, as the voters, and maybe they keep that in mind and not vote because it's a subjective decision. My lord, yes. But cannot be enforced in a court of law. My lord, that is what in the case of Ishaq Khan Khakwani, one of the learned judges, as my lord Mr. Justice Faiz Isa identified in Sheikh Rashid's case, took the view that no disqualification can really take place over here. These are very open-ended words. And your lordship points it out in your dissenting opinion in Sheikh Rashid's case, where your lordship identifies the 7 questions which are to be dealt with by the court, because that's... But Mr. Makhdoom, the problem is that I'm facing is you can't attribute redundancy to the Constitution. My lord, yes. Or to any law for that matter. And then secondly, you can't read into the Constitution. So the time frame, suppose if one were to say that this F applies for that election, that particular election which the nomination papers are rejected, and it ends. And that's not written. So how, I mean, that's the worry that I have. How do we read in a time frame into it? Either we read them with 63 and create a larger timeline concept. How does it work? Or go on the validation point. And if I may just add what my learned brother has just said, what I've understood from your submission is what you are saying, Samiullah Baloch does not accord with the Constitution. That's the submission. That's your argument. Can we not say that Samiullah Baloch for its time was good, valid judgment? However, since the lacuna has now been provided by Parliament, and they've given a 5-year time limit, both can be reconciled. That was good then, and now 5 years is. If your 5 years have expired, would you agree with that, or you would not agree with that? No, I would absolutely agree with that, my lord. My submission is that Samiullah Baloch was enacted, was decided at a time when we didn't have this newly amended law. At that time, the law did not, and there was no timeline set. The Samiullah Baloch case was decided in a particular manner. The legislature has now filled that gap. In Samiullah Baloch, it was observed that there is a declaration. Until such time that the declaration stands, then the person would remain disqualified or will not be qualified. Now the legislation says that the period of such a declaration will not go beyond 5 years. 5 years. Okay, now I will ask you the supplementary question, and I knew you would come here. Thank you. Now can I put it to you that Section 232(2) is unconstitutional? Can I put this to you or not? My lord, that is a very valid question. Of course, your lordship can put any question. No, yes. My lord, because one view can be, which is probably not probably, in my opinion, definitely the correct view, that where this honorable court has interpreted a provision of the Constitution and made a declaration about a provision of the Constitution, then on the doctrine of legislative repeal, that constitutional interpretation can only be undone by an amendment to the Constitution. And that brings us to the question that how could the Constitution be controlled by a sub-constitutional legislation? The Constitution is talking about a declaration, gives no time frame. Could we, through an act of Parliament, start adding things to the Constitution? We can't do that. My lord, I would say that the declaration made by the Parliament is in consonance with Article 63(1)(h) of the Constitution, which provides a time frame for the kind of offences which will fall under F. Because that involves conviction, that's a criminal case. But if you look at 63P, 1P or whatever it is, the P, the last one. Yes, madam. The Constitution itself allows that through an act of Parliament you can regulate this provision. And wherever it's so required, it's given. So, just taking it a little more, suppose, let's imagine Samiullah Baloch was not decided. And we are deciding it today. My lord. Just for the sake of, to take the argument a bit forward, and let's assume everyone agrees with me
And we say since 62(1)(f) does not provide a time limitation for disqualification, therefore let us be guided by other provisions of the Constitution, including 63(1)(h) and (g), where it provides for treason 5-year disqualification. So let us let this disqualification be for 5 years. Is this sound reasoning or not? My lord, it is, because your lordship is then virtually interpreting the two provisions together. When your lordship interprets... So at the end of the day, it depends on what is in my mind. Are you understanding? Yes, my lord. Is the Constitution so malleable that I can do whatever I want to with it? My lord, if 63(1)(h) was not there, let us assume there was only 62(1)(f), and if the 18th Amendment had not added the words which have been added, which is declaration to the contrary by a court of law, then 62(1)(f) would have been a provision which really provided no timeline. And if a person was declared not to be qualified under 62(1)(f), then the question would be for how long? My lord, the question can be for that term that he has been elected, or he can be re-elected immediately. My lord, for instance, the only other constitution that I have been come across which is a provision similar to that of Pakistan, where you cannot be elected to the parliament if you are the citizen or have acquired the citizenship of another country, is that of Australia. And the Australian High Court has dealt with this issue. No other constitution that I am aware of deals with. American Constitution, you have to be an American... You have to be an American citizen, but it does not say like our, my lord, 63(1)(c) says, or acquires the citizenship of a foreign state. So a dual citizenship over here disqualifies. In the Australian Constitution also, a dual citizenship disqualified. But the lordships over there have taken the view that if the person then steps down, abandons that citizenship, he can come back in tomorrow again. And there they have also taken the view that if he has applied for his citizenship to be renounced, then the constitution of our country will not be contingent on the delay or speed of the legal processes in another country. He has done the best he can, and therefore they have said he can continue to be in office. Why were you disqualified? My lord? Why have you been disqualified? From? The petitioner. The petitioner. Yes. Petitioner was disqualified. Your client. My lord, my client, yes, I was coming to that. My lord, he has been disqualified on the ground that he had created a trust for the property called Hyde House, and his defense was that Hyde House was a trust. The misdeclaration in the nomination form, is that the allegation? Yes, but his case was that there was no misdeclaration. No, that's a different thing. I just want to know what was the reason. So in all these cases, if you look at all these cases that where 62(1)(f) was invoked, the misdemeanor is misdeclaration, or maybe they have not given misdeclaration. Generically would be it, and misdeclaration in the worst form taken could be brought into age. Worst form, moral कहीं हो सकता है innocently भी हो, लेकिन चलें worst form में ले लें, it is moral turpitude, and that provides for 2 years plus 5 years, so that's 7 years. So even if suppose a person did not get convicted because there was no case filed, worst to worst, if the case was there, he would be out in 7 years. So 7 years period could be easily read into the F clause, because that's the only natural corollary. I mean, it doesn't make sense otherwise. Yes, my lord. And again, would there be any incident coming out of F which will go out of H? My lord, मतलब आपने नई केस बनाया, सपोज मिसडिक्लेरेशन हुई, उसके खिलाफ किसी ने कोई क्रिमिनल केस ही नहीं किया, अगर हो जाता तो वो 2 साल वो होता और फिर उसके बाद 5 साल होता, यही है ना? Is there any situation in F which would go outside H? My lord, not that I can think of. No. Do you think the words in F, it says, it doesn't end by a country by a court, it says court of law. My lord, yes. Is a court of law different from a constitutional court?
Because it could have stopped at the word court. So I just want to know, does it, the of law, add anything or doesn't add anything? My lord, of law adds in the sense that probably the returning officer will not have this power. Well, the returning officer is not a court. I'm just thinking in terms of Section 9 courts under the CPC. Are these court of law Section 9 courts or court of law, because it should have said, it could have ended by saying by any court. My lord, over here... Are we distinguishing between the constitutional court and a civil court of competent jurisdiction, or we are not? It's meaningless, irrelevant. This honorable court and your lordship yourself have held that over here the word court of law means a court of plenary jurisdiction. In Panama 1, which was not subsequently followed in Panama 3, this honorable court... What do you mean by Panama 1 and Panama 1, my lord, was the first case which was decided 3-2, and Mr. Justice Ijaz Afzal Khan, writing for the majority, said that court over here means a court of plenary jurisdiction. Meaning Section 9 court. Section 9 court, a court which will take evidence, which will examine the issues, where a trial takes place. Or it could be civil or criminal. He doesn't make that distinction. And I would submit that if your lordship have to... Then how did that view change? Without mentioning what they have done in Panama 2 and Panama 3. Is it referred to Panama 1 and Panama 2 and 3, this aspect? No, my lord. Your lordship notices that in your lordship's judgment in Sheikh Rashid's case. Actually, that was not a judgment, it raised a number of questions. Yes, it raised a number of questions. Yes. But your lordship will see that even after Samiullah Baloch, different tests have been applied. The author judge of Samiullah Baloch was also the Chief Justice of Pakistan in Faisal Wabda's case, and has taken a different view without any reference to Samiullah Baloch. Where is that view? My lord, that is reported. Repentance was that he did not contest the elections, so there was a repentance from... My lord, that is Muhammad Faisal Wabda versus Election Commission of Pakistan and others. PLD kya? My lord, this is 2023 SCMR 370. My lord, 370. My lord, I have put these cases together in a bundle for ease of reference of your lordship. And this would... Sir, मैंने और पैसे ज़ाया करवाए आपके? Sir, ये आपके जो 62(1)F पे judgments हैं. ये पहले बताएं ये वाला केस. Yes, sir. It is the last tab. It is tab 20. So you're a member of this? Yes. Well, my lord is one of the members. Yes, his lordship is one of the members. You said it as if it was something wrong. Can you read the relevant portion? My lord, yes, paragraph 4, it's a 2-page judgment really. Paragraph 4, page 373. The petitioner states before the court that he regrets his claim of renunciation of the US nationality at the time of filing his nomination papers for the election of NA 249 Karachi on 7/6/2018. He further states he had then initiated a process for such renunciation, but the certificate of loss of nationality of the US was issued to him on 25th June 2018. He admitted that he was disqualified from contesting the election under Article 61(3)(1)(c) of the Constitution on the date when he had filed his nomination papers for the election of NA 249 Karachi, and that his affidavit filed in with the nomination paper thus contained an erroneous statement which he regrets. In order to demonstrate his good faith in remorse for his mistake, he undertakes that he will resign from the office of the member of the Senate to which he was elected. In view of the said statement and undertaking of the petitioner, we are of the opinion that we need not proceed further in the matter in the peculiar facts and circumstances of the case. And if your lordship may see the last sentence, which is the last 3 lines, it is clarified that the petitioner shall not be considered disqualified in any subsequent election on the basis of the instant. The repentance is that period, that particular election. Yes. And so, but this is after he enjoyed the full tenure of the Senate. Yes. Yes, and then he resigned. He resigned. But एक चीज देखिए, Samiullah Baloch में paragraph 6 में the concept of repentance is mentioned. Yes, my lord. But I don't find a finding on it then. No, there is argument of counsel finds mention on repentance. My lord, yes. But then it is, though the judgment talks about Islamic injunctions, this concept is not discussed unless I've missed it. No, it is not discussed, my lord. That judgment is also on tab 7 of this very bundle. So are you repentant?
So, Mr. Makhdoom, we could look at it like this, you see. Are you repentant or you claim you've done no wrong? My lord, at the moment you can only be repentant because your case is over. My case is over, yes. I presume you are repentant. So one reconciliation. Reluctantly repentant. My lord, his case was that I made no misdeclaration. My children had declared it as their property. So one reconciliation of 62(1)(f) with H could be that if there is a misdemeanor of misdeclaration and no criminal case is made out, then he just misses out on the election and the matter comes to an end. Yes. But if you want to take it further and you file a case against him which is criminal, then H kicks in and you go through a conviction and 5 years. So there's a 7-year period there and there's an election period here. Yes, because why didn't you not book him in any criminal case? Because you could do that. For any misdemeanor, you could have done that. If you don't let him go and you don't take criminal proceedings, then there has to be some mechanism, because if you take criminal proceedings, the mechanism is 7 years. But if you do not take criminal proceedings, then there must be some way out also. Because it's short of that, because nobody bothered to take the person on for that misdemeanor. So, I mean, Mr. Makhdoom Ali Khan, but I think, can we go back to Faisal Wavda's case, please? My lord, yes. You said Samula is not mentioned. Samula is mentioned there. Is mentioned. Ye zara usse pehla wala padhne, therefore. Bilkul paragraph mein mentioned. It's mentioned, but not followed, because Islamabad. No, just padh dein zara sir. Therefore, it was concluded. My lord, usse agar zara upar aap dekh le, the Islamabad High Court found that the petitioner was disqualified pursuant to the case reported as Speaker National Assembly of Pakistan versus Habib Akram for submitting a false affidavit, hence no declaration was required. Therefore, it was concluded that the consequences given in case reported as Samiullah Baloch and others versus Abdul Karim Noshirwani would follow by finding that a formal declaration by a court of law was not required to disqualify the petitioner under Article 62(1)(f) of the Constitution. The impugned judgment has in its para 11, 12 and 13 therefore misconstrued both Habib Akram and the Samiullah Baloch case. So they say it's been misconstrued, and resultantly the impugned judgment is legally not sustainable. How do you reconcile the two? This judgment and Samiullah Baloch? My lord, if Samiullah Baloch was... No, how do you reconcile the same two judgments by the learned same judge? My lord, my submission is that if Samiullah Baloch was strictly followed, there was no way out but to disqualify Mr. Faisal Wavda and Islamabad High Court. For life, because Islamabad High Court had correctly decided the case. He will be disqualified because of his corrupt practices. Who, my lord? The person who gives false statement. Yes, my lord. Corrupt practice defined in section 167 of the election laws. My lord, yes. But for that declaration, there must be criminal proceedings as provided in section 174. Yes, penalty for corruption or corrupt practices. उनको सजा होनी चाहिए कोर्ट से. जी. Court means criminal court. Your lordship is absolutely When there is no right. declaration from the court, can person be still called as a corrupt practice? My lord, that is my submission, that 62(1)(f), the declaration which they're thinking about is the declaration under now the Election Act 2017, previously the Representation of People Act 1976, and the words used over there were statement and yes. declaration. Yes. So punishment for punishment, the court, criminal court. Yes. There must be a fair trial. Article 10A. Thereafter, if the court declares that the person has committed an act of corrupt practices, that is why your lordship will have to read 62(1)(f). Once that declaration is made, then under 62, if somebody shows at the time of submission of papers that this person is disqualified, is not qualified to be elected, his papers can be rejected. Whether in 62 period of disqualification can be made or not. My lord, my humble submission is... Are you also in this case, Mr. Mohammed? Yes. Are you also in this case? My lord, I'm assisting Mr. Makhdoom Ali Khan in the same matter, my lord. Okay, sorry. I was counsel in... We wanted to hear the other version as well. Because all of you seem to be on the same side in a way. So we wanted better articulation of the contrary viewpoint. Who would canvass that viewpoint?
Anyone in the court who will canvass the contrary viewpoint with some level of seriousness. Except Sana Baloch, everyone. Sir, if you allow me just... No, anyone in this courtroom who wants to canvass the contrary viewpoint with the level of seriousness, we would like to hear. Because you're an Attorney General and most of them are just saying what you are on the same side. My Lord, I would like to submit. कौन बोल रहा है? From Lahore. Khurram Raza from Lahore, my Lord. Okay, then you please make yourself attend here. We don't want to hear important cases on video link. If you are serious about this case, come to Islamabad. My Lord, I will. One who has the opposite viewpoint, senior counsel, Mr. Makhdum Ali Khan. My Lord, the contrary viewpoint. I sent all the respondents. Where is Mr. Shoaib Shaheen? He was here in the morning. Would he be canvassing the contrary viewpoint? Shoaib Shaheen साहब चले गए? अच्छा. Mr. Babar once supported the lifetime ban in the Samila Baloch case, so he might be a कौन बोल रहा है? आप किस point? Mr. Qayyum बोलते हैं? No, what about yourself? What about yourself? What about yourself? Which view are you supporting? Lifetime ban? Lord, I am supporting the law. I am against lifetime ban. अच्छा, आपके साथ जो खड़े हैं वो क्या कहते हैं? वो अपोज कर रहे हैं। वो अपोज कर रहे हैं। तो आप आइए जरा इस्लामाबाद, जरा अपनी हमें दीदार कराइए. We don't want to miss any valuable word uttered by you. So please be here. We will now be adjourning this case, and we would like to maybe we appoint some person from the other side, if we can say. आप बल्कि अगर आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है उसको भी साथ लेके आए लाहौर से. बस भर के लेके. My Lord, there is a नंबर में कौन है केस में? जो सुबह का केस था, ये सैयद असगर हुसैन सब्जवारी. ये केस है काशिफ महमूद का. आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने सुबह का केस, ये इशू है आपके केस में. आप लाइफ टाइम बैन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, सिंपल बता दें, लाइफ टाइम बैन और 5 year बैन और नो बैन. लाइफ टाइम बैन. सो माशाल्लाह आप खुद हैं, तो आप आते ना सामने, हम आप बार बार पूछ रहे हैं. नहीं देखिए, हमें मावनत चाहिए ना, कि अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं. वी वर लुकिंग फॉर सम सीनियर काउंसिल टू कैनवस द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. खैर, आपने सारी बातें तो सुन ली. आप बैठे हुए थे ना सुबह से? नहीं सुन ली ना सारी बातें. हम आज अजर्न करेंगे. अब तो 3 बज गए, तो ये लोग भी आ जाएं. शायद इनके लिए कल मुश्किल हो आना, परसों पे रख लेते हैं फिर ये केस. ठीक है. और अगर आप कोई एनीवन कैन सपोर्ट, आप किसका नाम तजवीज करें जिसको हम माइकल बना दें, क्योंकि दूसरा कैनवस करे व्यू पॉइंट. माइकल्स तो खैर न्यूट्रल होते हैं, मगर क्योंकि वी हैव द सीनियर काउंसिल हियर ऑलरेडी. द प्रेसिडेंट इज हियर, मिस्टर मखदूम अली खान इज हियर, सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ अदर अटॉर्नी जनरल इज हियर. आप भी इधर हो. सिद्दीकी साहब हो सकते हैं. अहमद या सलाउद्दीन.
case, Mr. Munir Malik was amicus. He was amicus then. We saw these. There were a number of Mr. Asma Jahangir was there. Munir Malik was amicus then. Samila Baloch. Whether he will be, how well he is. Would you link in Samila Baloch? No, but I thought the respondents would be opposing this. The respondents in these cases would not be opposing would be supporting the lifetime ban. Mr. Maktoum Ali Khan, you won everyone over. All the respondents are now against the lifetime ban. I don't understand. So In fact, my lord, the opposing side, they were initially were of the fact that it must be a lifetime. Prior to that, in 2018, we are those who are making out that we should not be given a lifetime. We are for the 5 years. So only one thing is this, my lord, the whole scenario, I want to just add one thing, that is that a declaration and the conviction, these are the two words which are very necessary to be adjudicated by this honorable court. The one thing is this, that the conviction which has been maintained by any criminal court, that has to be given a kind of the seal of legality may be coming from the Election Commission of Pakistan, because in that the original trial court has to send the record of that case to the commission, so that afterwards that can become into the force through the legality, that next time अब एक आदमी को सजा हो गई, एक आदमी को for 2 years under 199 200 of the RUPA or the now presently Election Act, or under 471, that conviction will thereafter be sent to by that court to the commission, Election Commission. The Election Commission will then going to file a complaint against the. आप मुख्तसर बात करें ना, आप अपनी तकरीर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं क्या आप कहना चाहते हैं? 1F की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी वो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट से स्टार्ट होंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका फायदा क्या इस बात करने का? ये फायदा है कि बगैर सजा के आप कहते हैं कि बगैर कोर्ट के कन्विक्शन के आप कहते हैं कि डिक्लेयर किसी को नहीं किया जा सकता। नहीं सर, नहीं, कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को फिर भेजेगी और वहां से कंप्लेंट, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पे हो सकता है, ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) के ऊपर पोस्ट कन्विक्शन। जी सर। सनाउल्लाह बलूच साहब, ये देखें बहुत पेचीदा आईनी कानूनी मसला है। यकीनन आप पार्लिमानी मेंबर रहे और अच्छी तरह से आइन को समझते हैं, मगर हम आपको मौका देते हैं कि अगर आप कोई वकील करना चाहें, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं ना लाइफ टाइम बैन को, तो क्योंकि ये इसमें ज़रा हमें तशरीह करना होगी, तो ज़रा यकीनन आपकी महारत है, पार्लिमानी महारत, मगर ये ज़रा बहुत टेक्निकल इश्यूज भी हैं, तो हम आपको एक मौका भी देते हैं, अगर आप किसी वकील को करना चाहें, आपकी मर्जी है तो आप कर लीजिए। ठीक है, हम आपकी बात हम नोट कर ली, मगर वो देखें फिर हमने जितने बहुत सारी आर्गूमेंट डिस्कशन यकीनन आपने सुने होंगे, तो आप अगर कोई करना चाहे वकील हम कर लें, तो हम परसों पे फिर इसको रखते हैं, परसों केस 11:30 बजे। मैं सर इसमें CM first application RO has rejected my nomination papers on the ground that disqualification is perpetual and for life. इसीलिए तो हम चाह रहे थे ना, once and for all सुप्रीम कोर्ट बैठ करके ये तयन कर ले, बिकॉज एक RO कुछ करेगा, दूसरा RO कुछ करेगा। अच्छा मिस्टर मखदूम अली खान, one other issue, my lord. One is, you win all or lose all. One is the middle way. The middle way is that Al-Samrez was, the law undid its effect. Can we have the list of those cases where a non-obstante clause, irrespective of anything held in a judgment, and they were sustained? Because that could be the middle way, that we don't touch the judgment, but now that the law has come, it occupies the legislative domain. This is one aspect. The other aspect which has not been touched upon is that we have only read the constitutional provisions so far. Most of these cases deal with the earlier election laws, which was ROPA, Representation of the People's Act 1976. जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सियासतदान जी ताहियात नाइले बाबत केस की ॿुधणी जारी आहे। अवां खे आगाह पिया सुप्रीम कोर्ट जी 7 रुकनी लॉ जो बेंच हिन केस की ॿुधणी करे रही आहे। नाज़रीन, ही हुई हिन वक्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़।
हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। अरे वाह, आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा। पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 100 रुपए कम। अब हर किचन में ईद क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई। और आपके? सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। हेडलाइन लाए ऐसा 57 कयो है। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(f) तहत ताहयात नाहिलिया केस की ॿुधणी मुलतवी। मामूली सबबनि जे बुनियाद ते ताहयात नाहिलिया गैर मुनासिब नथी लॻे। क़त्ल ऐं गद्दारी जहिड़नि संगीन ॾोहनि में कुझु अरसे बाद इलेक्शन विढ़ी सघिजे थो। आइन में हर सज़ा जो मुदो आहे त पोइ नाहिलिया ताहयात कीअं थींदी। जस्टिस मंसूर अली शाह जा रिमार्क्स। ताहयात नाहिलिया जी तशरीह वारे फ़ैसिले जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे इस्तदा तवाज़ जो मौक़िफ़ छा आहे। इलेक्शन एक्ट हलणु घुरिजे या सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी सां जो अटॉर्नी जनरल का सवाल। असां इलेक्शन एक्ट जी ताईद करियूं था छाकाणि त उहो वफ़ाक़ जो ठाहियल कानून आहे। अटॉर्नी जनरल जो जवाब। समूरनि एडवोकेट जनरल्स इलेक्शन एक्ट में तरमीम जी हिमायत करे छॾी। लगे तो चूंडू रोकण लाइ टैक्स साठ इस्तेमाल कया पिया वञनि। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी सां जा PS 91 जे रिटर्निंग ऑफिसरनि खे पेशावर हाई कोर्ट खां मुअत्तल करण ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जी अपील ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस चयो आहे त इलेक्शन कमीशन को बि गैर कानूनी या गैर आइनी क़दम नाहे खयो। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर ते स्क्रूटनी जो अमल शुरू करे।
असी समझूं था त इदारे के पंहिंजी हदनि में रहण घुर्जे। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ी साचा सुप्रीम कोर्ट में गुम थियल माण्हुनि ऐं जबरी गुमशदगियुनि जे केस में ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस जो चवणु आहे त गुम थियल माण्हुनि जे केस खे सियासी मक़सद लाइ इस्तेमाल करणु न ॾिनो वेंदो। ही केस संजीदा नोईअ जो आहे, अदालत जो मज़ाक बणाइण जी इजाज़त न ॾींदा। गुम थियल माण्हुनि जो मसइलो उन वक़्तु हल थींदो जॾहिं सभु ज़िम्मेवारियूं निभाइनि। 70 करोड़ डॉलर जी किस्त लाइ पाकिस्तान जी IMF के समूरन शर्तनि ते अमल करण जी ख़ातिरी। नाणे वारी वफ़ाक़ी वज़ारत जी निगरान वज़ीर डॉक्टर शमशाद अख्तर ऐं स्टेट बैंक जे गवर्नर IMF खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हुकूमती इख्तियारनि जो IMF जे सभिनी शर्तनि ते अमल करण जो अज़म जो इज़हार। IMF जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड 11 जनवरी ते वाशिंगटन DC में घुरायल इजलास में पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते वीचार कंदो। इस्लामकोट वेझो 16 वरीअ जी निगरीज़ जो फाव ॾिनल लाश ॻोठ सिनिहार विकिया में कौशल्या मेघपार जो पण में टंगियल लाश मिलियो। पुलिस लाश खणाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो। हैदराबाद में हिरासत जो शिकार समाजी वर्कर कशिश ख्वाजा जी ASSP अमजद शेख सां मुलाक़ात। कशिश ख्वाजा ASSP खे पंहिंजे मसइलनि खां आगाह कयो। अमजद शेख ह्यूमन राइट्स सेल इंचार्ज खे मामले जी इंक्वायरी करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत करे छॾी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भलीकार आऊं मारवी थई ऐं आऊं दुआ भुट्टो। नाज़रीन हेडलाइन सां ॾिठियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। अरे वाह, आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 100 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आया हूँ जी होस्ट सरवर जबीन, प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार, एहसास ऐं यादुनि सां आहे। ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी, त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां, तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा। हिन प्रोग्राम में आहे अव्हां जी पसंदीदा शख्सियत जी ज़िंदगीअ जो हर पहलू।
असीं मुलाक़ात कराईंदासीं अव्हां जी पसंदीदा शख्सियत सां। वेलकम बैक नाज़रीन, अवां खे बुलेटिन में भली कारसम था। बुलेटिन जो आगाज़ कंदासीं ख़बर सां त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(f) ते ताहियात नाइले केस जी ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। अवां खे ख़बर ॾियनि पिया अदालत चयो त मामूली सबबनि जी बुनियाद ते ताहियात नाइले गैर मुनासिब नथी लॻे। क़त्ल ऐं गद्दारी जहिड़नि संगी ॾोहनि में कुझु अरसे बाद इलेक्शन विड़ी सघिजे थो। आइन में सज़ा जो मुद्दो आहे त पोइ नाइली ताहियात कीअं थींदी। जस्टिस मंसूर अली शाह जा रिमार्क्स आहिनि। आगा कंदासीं नाज़रीन अवां खे ताहयात नाइली जी तशरीह वारे फ़ैसिले जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे इस्तदा तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे? इलेक्शन एक्ट हलणु घुरिजे या सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो? चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो अटॉर्नी जनरल खां सवाल। असां इलेक्शन एक्ट जी ताईद करियूं था छाकाणि त उहो वफ़ाक़ जो ठाहियल कानून आहे। अटॉर्नी जनरल जो जवाब। समूरनि एडवोकेट जनरल्स इलेक्शन एक्ट में तरमीम जी हिमायत करे छॾी। ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(f) तहत ताहयात नाइली केस जी ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। आगा कंदासीं नाज़रीन अवां खे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(f) तहत ताहयात नाइली केस जी ॿुधणी मुलतवी कई वई आहे। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। इस्लामाबाद खां ब्यूरो चीफ नज़ीर चारण लाइन ते मौजूद आहे। जी नज़ीर, आगा कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाइले बाबति दाख़िल दरख़्वास्तुनि ते केस जी ॿुधणी जेको आहे सो मुलतवी कई वई आहे। जॾहिं त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तरफ़ां ताहयात नाइले बाबति दाख़िल दरख़्वास्तुनि ते जेको फ़ैसिलो आहे उहो लिखणु शुरू करे ॾिनो आहे। जॾहिं त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तरफ़ां इहे रिमार्क्स ॾिना विया आहिनि त जेको आहे सो असां इन केस खे अध में नथा छॾे सघूं ऐं जेको आहे सो हाणे इहो ॾिसणो पवंदो ऐं वाज़ह करिणो पवंदो त आर्टिकल 62(f) तहत जेके आहे में जेके शिकूं शामिल कयूं विया आहिनि उहे केतिरे क़ानूनी आइन मूजिबि आहिनि ऐं अदालतनि में जेके मुआविन आहिनि उहे जेके आहिनि सो उन्हनि जेके आहिनि सो पंहिंजा समूरा जेके आहिनि सो दलील ॾिना आहिनि ऐं इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करिणो पवंदो त आख़िर हिन ताहयात जेको नाहली वारो जेको फ़ैसिलो ॾिनो वियो हो उन ते जेको आहे सो कहिड़ो फ़ैसिलो जेको आहे सो अची सघे थो। हिन वक़्तु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तरफ़ां जेको ताहयात नाहली बाबति केस में जेको पंहिंजो फ़ैसिलो आहे उहो जेको आहे सो ॿुधाए रहियो आहे। ऐं चीफ जस्टिस इहो बि चयो त हाणे जेको आहे सो हिकु मार्शल आर्ट डिक्टर ख़िलाफ़ जेके अल्फाज़ अदा करण में एतिरा ख़ौफ़ज़दा छो आहिनि जेके दलील वकील ॾेई रहिया उन्हनि खे मुखातिब थींदो चयो त हाणे हिकु बुनियादी उसूल क़ाइमु करिणो पवंदो ऐं असांजी राय में असुल आइन ऐं ॿियनि जी तर्मीम में जेको तज़ाद आहे या जेको इख़्तिलाफ़ आहे उहो जेको आहे सो हाणे ॾिसणो पवंदो। ऐं मां जेको आहे सो इहो वाज़ह तौर ते चवां थो त जेके बि मुतासिर फ़रीक़ आहिनि उहे अदालती बालादस्ती ते यकीन रखनि था ऐं अदालती बालादस्ती हूंदी त पोइ मुल्क में आइन ऐं कानून जी बालादस्ती क़ाइमु थींदी। जॾहिं त जेके चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इहे बि रिमार्क ॾिना त मां जेको आहे सो कंहिं बि तरीक़े सां जेको आहे सो इहो पार्लियामेंट खां जेकी कानून साज़ी जा जेके पार्लियामेंट खे इख्तियार मिलियल आहिनि उहे नथो खसे सघां ऐं कानून साज़ी करणु या तरमीम करणु जेको आहे सो उन जा जेके इख्तियार आहिनि उहे वाज़ह तौर ते चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजे रिमार्क्स ॾिनो त उहे पार्लियामेंट खे आहिनि। ऐं जेको आहे सो उन जे दौरान जेके अटॉर्नी जनरल हो ऐं उन बि जेको आहे सो दलील ॾींदे चयो त जेकी नवाज़ शरीफ़ ते ताहयात नाहली वारी जेके तलवार लटकियल आहे उहा हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं कानून खे ऐं आइन खे ऐं अदलिया खे जेको आहे सो जेके ताहयात नाहली जा जेके फ़ैसिला ॾिना वञनि था उन्हनि में जेको आहे सो तरमीम करणी पवंदी। ऐं चीफ जस्टिस इहो बि चयो त जिन बि आइन जी जेकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे या जिन डिक्टेटर जे शिप में जेके हुकुम ॾिना आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ जेको आहे सो हाणे वाज़ह तौर ते सभिनी खे आवाज़ु उठाइणो पवंदो। आख़िर ॿुधायो वञे त उहे ख़ौफ़ज़दा छो आहिनि, कंहिंखां ॾिजनि था। मुल्क में आइन ऐं कानून मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे हाणे जेको आहे सो जिन बि जेके ग़लति फ़ैसिला ॾिना या जिन जेके डिक्टेटरशिप ज़रिए जेके सो हुकुम ॾिना उन्हनि ख़िलाफ़ हाणे जेको आहे सो ख़ौफ़ज़दा थियण जी कंहिंखे ज़रूरत न आहे। ऐं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जेको आहे सो हिन वक़्तु जेकी ताहयात नाहली बाबति जेके केस में जेके फ़ैसिला हुआ उहे जेके सो ॿुधाए रहियो आहे। जॾहिं त जस्टिस मंसूर अली शाह बि जेको आहे सो इहे रिमार्क्स ॾींदे वाज़ह कयो आहे
त जेको आहे सो हाणे कंहिंखे बि जेको आहे सो कूड़ ॻाल्हाइण जी ज़रूरत न आहे। हाणे सिर्फ़ु क़तल ऐं गद्दारी करण ते खां पोइ जेको कुझु अरसनि खां पोइ जेके वापसि अचनि था उन्हनि ख़िलाफ़ बि जेको आहे सो जेको आइन ऐं कानून हूंदो उहो जेको आहे सो हुकुम ॾियणो पवंदो ऐं ज़ातियात में अची करे को बि जज कंहिंजे ख़िलाफ़ को जेको आहे सो फ़ैसिलो नथो ॾेई सघे। चीफ जस्टिस चयो त असुल में जेको इख़्तिलाफ़ आहे उहो इहो ई आहे त जेको फ़ैसिलो ताहयात नाहले बाबति जेको ॾिनो वियो आहे उन में जेको आहे सो कंहिं क़िस्म जी जेकॾहिं तरमीम करणी पवंदी या कानून साज़ी करणी पवंदी त उहो बि जेको आहे सो पार्लियामेंट खे आहे। जॾहिं त जेके मखदूम मोहम्मद अली मोहम्मद हो जेके रिमार्क्स दलील ॾींदे अटॉर्नी जनरल चइनी सूबनि मां बि आयल हुआ। ठीकु आहे, महिरबानी नज़ीर आगाह करण लाइ। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगी बाबत केस जी ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मसर ऐं जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हुआ। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा रिमार्क्स ॾींदे चयो त गुम थियल माण्हुनि जो मसइलो तॾहिं हल थींदो जॾहिं असां सभु गॾिजी कोशिशूं कंदासीं ऐं ज़िम्मेवारी निभाईंदासीं। चीफ जस्टिस चयो त नोटिस त नाहे कयो पर अटॉर्नी जनरल हिते अची ऐं ॻाल्हियूं ॿुधाए त सुठो हूंदो। पार्लियामेंट खे कानून साज़ी करण जो हुकुम नथा ॾेई सघूं। चीफ जस्टिस सवाल कयो त छा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट खे कानून साज़ी जो हुकुम जारी करे सघे थी। असां सम्झूं था त इदारे खे पंहिंजी हदनि में रही कमु करणु घुर्जे। अदालत वकीलनि जे दलील ॿुधण बाद केस जी ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾी। एतज़ाज़ सेशन समेत ॿियनि जी जबरी गुमशुदगी ख़िलाफ़ दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं हुयूं। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जो चवणु आहे त लॻे थो त चूंडूं रोकण लाइ टेक्साट इस्तेमालु कया पिया वञनि। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा PK91 जे रिटर्निंग ऑफिसरनि खे पेशावर हाई कोर्ट पारां मुअतल करण ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जी अपील ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त इलेक्शन कमीशन को बि गैर कानूनी या गैर आइनी कदम नाहे खयो। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर ते स्क्रूटनी जो अमल शुरू करे। इलेक्शन कमीशन जे वकील दलील ॾींदे चयो आहे त सिंगल बेंच रिटर्निंग ऑफिसरनि जी तलबीअ बावजूद ख़ुदि रुख़सत थी वई। पेशावर हाई कोर्ट पंहिंजे हुकुम में आरो ख़िलाफ़ कुझु बि नाहे लिखियो। चीफ जस्टिस सवाल कयो तव्हां पंहिंजी मर्ज़ीअ जो रिटर्निंग ऑफिसर लॻाइण चाहियो था। पेशावर हाई कोर्ट लिखत कैंसिल करे छॾी। असां अव्हां ते ॾंड छो न विझूं, नोटिस खां सवाइ लिखत कैंसिल करे छॾी। चीफ जस्टिस चयो त पेशावर हाई कोर्ट जे जज नोटिस जारी करण बि मुनासिब न सम्झो। हीअ कहिड़े क़िस्म जा ऑर्डर जारी थी रहा आहिनि। अदालत चयो त इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी या गैर आइनी कदम नाहे खयो। इलेक्शन कमीशन फौरी स्क्रूटनी शुरू करे। अदालत पेशावर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जी अपील मंज़ूर करे वरिती आहे। लाहौर जे तक NA 127 तां PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नामज़दगी कागज़ मंज़ूर बाबति लिखत में फ़ैसिलो जारी कयो आहे। रिटर्निंग ऑफिसर फ़ैसिलो जारी कंदे चयो आहे त ॿियनि सियासी जमातनि जे लाॻापन बाबति इलेक्शन कमीशन सां राब्तो कयो वञे। शिकायत कंदड़ शख़्स मोहम्मद अयाज़ ॼाणायल तक सां वास्तो नथो रखे। लाॻापियल फोरम सां राब्तो करे। वाज़ेह रहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे नामज़दगी फार्मनि जी मंज़ूरी ख़िलाफ़ ॿियनि सियासी जमातनि सां वास्तो हुजण जी बुनियाद ते दाख़िल कई वई हुई। पीपल्स पार्टी जे यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 28 सेनेटर्स सां असासन जा तफ़सील जमा न थी सघिया। इलेक्शन कमीशन खे 15 जनवरी ताईं असास जमा कराइण जी मोहलत ॾेई छॾी आहे। एल ताईं 28 सेनेटर असासन जा तफ़सील जमा नाहिन कराया, जिन में यूसुफ रज़ा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, शाहीन ख़ालिद ऐं आउन अब्बासी समेत ॿिया शामिल आहिनि। सैफुल्ला न्याज़ी, सादिक मोहम्मद अली, शाह ॼामोट, मियां रज़ा रब्बानी, इमामुद्दीन, शौकीन, फैसल सब्ज़वारी, ताज हैदर, निसार खोड़ो, ख़ालिदा तैयब ऐं शौकत तरीन जे ॿ असासन जा तफ़सील फ़राहम नाहिन कया विया। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त 15 जनवरी ताईं असासन जा तफ़सील जमा न कराईंदड़ सेनेटर्स जी मेंबरशिप मुअतल कई वेंदी।
पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 28 सेनेटर्स जा असासन जा तफ़सील जमा न थी सघिया आहिनि। इलेक्शन कमीशन खे 15 जनवरी ताईं असासा जमा कराइण जी मोहलत ॾेई छॾी आहे। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जे स्विच स्टार्ट में बाहि लॻण बाद केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूद ब्रेकर जी मुरम्मत न थी सघी। ज़रियनि मौजब नओं ब्रेकर ख़रीद करण में 15 ॾींहं लॻी सघनि था। पावर हाउस इंतज़ामिया मौजब मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन बि शदीद कोहीड़े सबब ट्रिप करे वई आहे, जंहिं सबब सिंध, पंजाब ऐं बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे बिजली फ़राहमी मुअतल आहे। इंतज़ामिया जो चवणु आहे त कोहीड़े जे ख़ात्मे ताईं मुतबादिल ट्रांसमिशन लाइन मां बिजली फ़राहमी ॾुखी आहे। गजा में नए साल दौरान बि इसराइली जारी सबब वधीक 180 मासूम फ़लस्तीनी शहीद थी विया ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अरब मीडिया मूजिब इसराइल पारां जबालिया मगाज़ी ऐं नस्रात में कैंपनि ते निशानो बणायो वियो। अरब मीडिया मूजिब नए साल जी शुरूआत में ई सऊनी फ़ौज गजा ते अंधाधुन हमला करण शुरू करे छॾिया। अरब मीडिया मूजिब इसराइली फोर्सेस राति देर सां उत्तर गजा जे ज़िले ज़ैतून में बमबारी कई, जंहिं सबब केतिरा ई फ़लस्तीनी शहीद थी विया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे। नज़र जी हद घटिजण समेत थधि में लगातार वाध थी रही आहे। मोटरवे पुलिस तरफ़ां कोहीड़े सबब ड्राइवरनि खे गाॾियूं आहिस्ते हलाइण ऐं फोक लाइट्स इस्तेमाल करण जी हिदायत करे छॾी आहे। कोहीड़े सबब रोडनि ते हादसे जा ख़दशा बि वधी विया आहिनि, जॾहिं त ट्रैफ़िक तमामु घटि हुअण सबब मुसाफ़िर बि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। बिरिया रोड, फरीदाबाद, दोदापुर, मीरापुर, भंगोबहण, गंबट, नव अमरोड, टोकरी, बांदी, मदयची, सिजावल चुणे चौक, करोंडी ऐं होसपुर में कोहीड़े सबब माण्हू घरनि ताईं महदूद थी विया। शेदादकोट, खुरड़ा, ठरी मीरवा, चरपार, कोटलालू, कासिमत, उस्मान शाहुड़ी, कमालदेरो, डोगरी, कोटेची, सुईकेस, गरेलो ऐं बरपासन वारनि इलाइक़नि में बि कोहीड़े सबब थधि में वाध थी वई। रहवासियुनि जो चवणु आहे त कोहीड़े सबब सिंधन ज़िंदगी जो कारोबार सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे ऐं थधि में बि वाध सबब टमाटनि, बसर, तिरनि समेत मुख़्तलिफ़ फसलनि खे बि नुक़सान पहुचण जो अंदेशो आहे। मलीर खां ठरी मीरवा वेंदड़ मुसाफ़िर वैन सां हादसे जे नतीजे में 5 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। मलीर खां ठरी मीरवा वेंदड़ मुसाफ़िर वैन जो मेमण ॻोठ वटि टॉलर सां टकर थी पियो, जंहिं जे नतीजे में 5 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया। हादसे खां पोइ इमदादी टीमुनि पहुची ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो। ठुल भरसा ए स्टेशन थाणे जी हद बलोच कॉलोनी मां नौजवान जो गोलियूं लॻल लाश हथायो आहे। इलाइक़े वासियुनि तरफ़ां इतला ॾियण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नौजवान जो मड़ अस्पताल मुंतक़िल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त फ़ौती शख़्स जी सुञाणप अकबर पुट वाहिद बख़्श कंडराणी तौर थी आहे, जंहिंखे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। पुलिस ॿुधायो आहे त नौजवान जे क़तल थियण जो कारण मालूम नाहे थी सघियो, जंहिं बाबति वधीक जांच कई पई वञे। मक़तूल नौजवान जे वारसनि ॿुधायो आहे त सिंधनि खे सां बि का दुश्मनी नाहे, नौजवान खे क़तल करे ज़ुल्म कयो वियो आहे। मक़तूल नौजवान जे वारसनि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त क़तल वाक़े जी जांच करे मुलविस वाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। गुलाब लगारी में ॻोठ माणिक लगारी स्टाबर सां 3 पोरियतनि जे घरनि खे बाहि विकोड़े वई। घरनि में पियल अनाज सड़ी रख थी वियो। मुतासिर राणो माछी मोहम्मद अली ऐं अली मोहम्मद माछी ॿुधायो त घरनि खे बाहि लॻण सबब संदन घर में पियल अनाज ऐं ॿियो ज़रूरी सामान सड़ी रख थी वियो। पंहिंजी मदद पाण तहत बाहि ते ज़ाब्तो आंदो वियो। मुतासिरनि ॿुधायो त बाहि सबब घर सड़ी वञण बाद कुटुब समेत खुले आसमान हेठि वेठल आहियूं। मुतासिर आला इख्तियारनि ऐं वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त संदन माली मदद करे पेश ईंदड़ ॾुखियाईनि खां आजो कयो वञे। गंबट वेझो शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी वरसीअ ते वेंदे मेरहान नेशनल हाईवे ते रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल नौजवान अस्पताल में फ़ौत थी वियो। हादसे सबब शेदादपुर वासी चालो नाते दिसकाणी ज़ख़्मी थी पियो हो, जंहिं ज़ख़्म जी सट संद अस्पताल में दमधणी हवाले कयो। अस्पताल इंतज़ामिया मूजिब ज़रूरी कार्रवाई बाद फ़ौती जो मड़ वासन हवाले कयो वियो। फ़ौती जो मड़ संदसि घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। पीर जो गोट भरिसां बबड़ो पुलिस ॾुहारे सां मुबैना मुक़ाबले दौरान हिकु ॾुहारे खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे।
पुलिस ॿुधायो त मुक़ाबले दौरान अगवा समेत मुख़्तलिफ़ ॾोहनि में मुलवस जवाबदार वसीम पुट गोस बख्श खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणो त गिरफ़्तार जवाबदार जे कब्ज़े मां हथियार बि हथ कया विया आहिनि। खेसि तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। पुलिस ॿुधायो त गिरफ़्तार जवाबदार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे संदसि ॾोही रिकॉर्ड जी वधीक जांच कई पई वञे। नाज़रीन ख़बरुनि ऐं अपडेट जो सिलसिलो जारी आहे। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मज़ेदार ऐं लज़ीज़ खाधा खाइण ऐं हुन खे ठाहिण जो त हर कंहिंखे शौक़ु हूंदो आहे। हर हंधि होटलनि, रेस्टोरेंट ऐं खाधे पीते जी दुकाननि जी बि भरमार आहे। पर महफ़ूज़ ऐं सिहतमंद खाधो कहिड़ो आहे ऐं हुन खे कीअं तयारु करे महफ़ूज़ करे रखी सघो था, इहो सभु कुझु अव्हांखे ॿुधाइण जे लाइ आउं हाज़िर थी आहियां अव्हां जी मेज़बान तानिया खान सेफ एंड हेल्दी फूड प्रोग्राम में। हिन प्रोग्राम में असीं वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल कंदासीं। हयात पिताफ़ी बरसाकोट मुबारक चनर जो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम हुअण सबबि ॿारनि जी तालीम सख़्त मुतासिर थी रही आहे। स्कूल जे उस्ताद अली गोहर चन्नड़ ऐं ॿियनि ॿुधायो त 10 सालनि खां स्कूल इमारत न हुअण समेत ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम बणियल आहियूं, जे सबबि ॿारनि जी तदरीसी अमल में सख़्त ॾुखियाऊं पेश अची रहियूं आहिनि। उस्तादनि ऐं ॻोठाणनि जो चवणो त स्कूल जी इमारत न हुअण सबबि ॿार थधि में खुले आसमान हेठि तालीम पिराइण ते मजबूर आहिनि। स्कूल जे उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि तालीम खाते जे आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त ॼाणायल स्कूल में बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम करे ॿारनि जी तालीम तबाह थियण खां बचायो वञे। मांझन शहर जे रहवासियुनि 20 सालनि खां गूंगो बणिजी ख़ैरियात पिनंदड़ फ़क़ीर खे मस्जिद जे लाउड स्पीकर में मौलूद पढ़ंदे ॾिसी खेसि पुलिस हवाले करे छॾियो। इलाइक़े वासियुनि ॿुधायो आहे त ॼाणायल गूंगो फ़क़ीर 20 सालनि खां सिंध इलाइक़े में गूंगे जो ढोंग करे माण्हुनि खां पिनंदो हो। रहवासियुनि ॿुधायो आहे त गूंगे फ़क़ीर खे मस्जिद जे लाउड स्पीकर ते मौलूद पढ़ंदे ॾिसी संदसि वीडियो रिकॉर्ड करे वायरल कई वई। रहवासियुनि ॿुधायो आहे त गूंगो थियण जो ढोंग कंदड़ फ़क़ीर खे सोघो करे पुलिस हवाले कयो वियो आहे। उन हवाले सां एसएचओ अमजद जुड़ेजो ॿुधायो आहे त सोघो कयल फ़क़ीर पंहिंजो पेट पालण लाइ गूंगे थियण जो ढोंग कंदो हो। इलाइक़े जे मौसस माण्हुनि जे चवण ते फ़क़ीर खे आज़ादु कयो वियो।
मटियारी में इलेक्शन 2024 जी सिक्योरिटी बाबति SSP मटियारी ऐं डिप्टी कमिश्नर जी सदारत हेठि इजलास कोठायो वियो। SSP मटियारी सैयद असगर अली शाह ऐं डिप्टी कमिश्नर DRO मटियारी लाल डिनो मंगी जी सदारत हेठि कोठायल इजलास में ज़िले जे DSPs SHOs ऐं ॿियनि अमलदारनि शिरकत कई। उन मौक़े ते SSP मटियारी अमले खे हिदायत कई त हर शहरी बराबरी जे बुनियाद ते इज़त जे लाइक़ आहे। संदन मसला हल करण पुलिस जी पहिरीं तरजीह आहे। SSP स्टाफ में ॿुधायो त इलाइक़े जा बुनियादी मसला हल करण समेत मंशात फरोश ऐं ॾोही वारदातुनि में मुलवस माण्हुनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। असगर अली शाह जो चवणु हो त आम चूंडनि दौरान अमन अमान जी बहाली यकीनी बणाइण लाइ हिफ़ाज़ती इंतज़ाम इंतहाई सख़्त कया वेंदा, जीअं कंहिं वणंदड़ वाक़िए खे मुंहुं ॾेई सघिजे। संदसि चवणु हो त अहसास ऐं ॿियनि पोलिंग स्टेशन ते अमन अमान बरक़रार रखण लाइ सिक्योरिटी प्लान जोड़ियो वेंदो। गंबड़ बरसा ड्रबमहर शाहजी वासिन तरफ़ा बदमनी ते ज़ाब्तो न अचण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन गुलाम कासिम उजण ऐं ॿिनि ॿुधायो आहे त अणॼातल जवाबदार रवासी ऐदल उजण जे दुकान सां ताला तोड़े लखे रुपए जो सामान खणी पिया आहिनि। मुज़ाहिरीन ॿुधायो आहे त इलाइक़े में चोरियूं फुरियुनि जा वाक़िया ॾींहों ॾींहुं वधी रहिया आहिनि, पर पुलिस ज़ाब्ते लाइ के बि संजीदा क़दम नथी खणे। रवासिन ॿुधायो आहे त इलाइक़े में ॾोही वारदातनि में वाद सबबि रवासियुनि जो घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी वियो आहे। मुतासिर रवासिन SSP खैरपुर का मुतालबो कयो त ॼाणायल इलाइक़े में बदमनी जो नोटिस वठी अमन अमान जी बहाली खे यकीनी बणायो वञे। टंडे यार में अणॼातल जवाबदार A सेक्शन थाणे जत में शीदी पाड़े जे घर मां रोक रक़म ऐं सोन खणी फरार थी विया। मुतासिर घर धणी ॿुधायो त संदसि घर भाती राति देर ताईं शादीअ जी तकरीब में वियल हुआ, जंहिं दौरान चोरनि संदन घर में दाख़िल थी 1.5 लख रुपया रोक ऐं 8 तोला सोन ऐं ॿियो सामान ॿुहारे खणी विया। मुतासिरनि ॿुधायो त वाक़िए जो इतला पुलिस खे बि ॾिनो, पर पुलिस अञा ताईं चोरी कंदड़ जवाबदार जो पतो नाहे लॻाए सघी। रहवासियुनि ॿुधायो त संदन इलाइक़े में चोरी ऐं फुरियुनि जूं कार्रवायूं वधी वियूं आहिनि, पर पुलिस को बि संजीदा तहरुक नथी वठे। मुतासिर रहवासियुनि आला SSP टंडो अलियार का मुतालबो कयो आहे त चोरी कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सोन ऐं रोक रक़म वापसि कराई वञे। कुबो सईद खान भरिसां पुलिस कार्रवाई दौरान स्मगल थींदड़ 1400 लीटर ईरानी तेल हथ करण जी दावा कई आहे। पुलिस ॿुधायो आहे त लियाबाद चौकी भरिसां कार्रवाई दौरान मज़दा ऐं डॉक्सन ज़रिए 1400 लीटर ईरानी तेल जी स्मगलिंग जी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। पुलिस ॿुधायो आहे त ड्राइवर ऐं सदस में साथन खे गिरफ़्तार करे संदन कब्ज़े मां हथायल ईरानी तेल ऐं गाॾियुनि खे तहवील में वरितो वियो आहे। पुलिस जो चवणु हो त गिरफ़्तार जवाबदारनि जी सुञाणप शेदात कोट पासी आमिर अली मक्सी अकबर अली ऐं खुशदार पासी अब्दुल करीम ब्रोही तौर थी आहे। पुलिस ॿुधायो आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि ख़िलाफ़ मंशियात एक्ट तहत केस दाख़िल करे वाक़िए जी वधीक जांच कई पई वञे। नाज़रीन, बुलड़ी शाह करीम जे ॻोठ रईस खान मोहम्मद रिंद में पीपल्स पार्टी जे जूने सियासतदान ऐं रिंद बिरादरी जे मौसूस शख्सियत मरहूम खान मोहम्मद रिंद जी 10वीं वरसी मल्हाई वई। वधीक तफ़सील ॾिसूं था याकूब जमाली जी हिन रिपोर्ट में। लाड़ सिंध जे जूने सियासतदान ऐं रिंद बिरादरी जे मौजूद शख्सियत मरहूम रईस खान मोहम्मद रिंद जी 10वीं वरसी संदसी ॻोठ रईस खान मोहम्मद रिंद में मल्हाई वई। मरहूम रईस खान मोहम्मद रिंद जे मज़ार ते अॻूणे MNA सैयद नवीद कमर ज़मा शाह, एजाज शाह बुखारी, PP अॻवान खुरम करीम शुमरो, मरहूम खान मोहम्मद रिंद जे पगदार पुट, रिंद क़ौमी इताद सिंध जे नाइब सदर रईस ज़ाहिद खान रिंद ऐं PP अॻवान शमीर खान रिंद, शाहिद खान रिंद, जावेद रिंद जी अॻवाणी में मरहूम रईस खान मोहम्मद रिंद जी क़बर ते गुलनि जूं चादर चाढ़े क़ुरान ख़ानी कराई वई। मरहूम जे मग़फ़िरत जे लाइ दुआ घुरी वई। हर साल पंहिंजे बाबा खे हुनजा दोस्त घुराए असां यादि कंदा आहियूं। इहो हुननि जी कयल असांखे नसीहत आहे, छो जो बाबा अक्सर चवंदो त यार ज़ाहिद जेकॾहिं आउं वञा त हिकिड़ी देग बि लाहिजो, मूंखे यादि कजो। असांजो वॾो हिते बाग़ हिते बुज़ुर्ग हो माइटो असांजो चचा खान मोहम्मद ऐं उन जी अॼु 10वीं वरसी आहे। कैमरामैन नसीर मल्ला सां गॾु याकूब जमाली, धरती TV न्यूज़, बुलड़ी शाह करी। नाज़रीन, खिपरो भरिसां ॻोठ सुल्तान जोनेजो में ॻोठाणनि पारां मच कचहरी कोठाई वई, जंहिंमें इलाइक़े वासियुनि शिरकत करे सिंध धरतीअ खे भेटा पेश कई। वधीक तफ़सील लाइ पेश आहे ज़ाकिर शहर जी हीअ रिपोर्ट।
केपरोलग सिरनवारी गोठ सुल्तान जुणेजो में गुल मोहम्मद लाल मोहम्मद एजाज मोहरम ऐं अयाज मोर जुणेजो पारां ॻोठाणी मच कचहरी जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। मच कचहरी में इलाइक़े जे माण्हुनि जजे तइदाद में शिरकत कई, जॾहिं त प्रोग्राम में सुगड़न ॾोर बेत ॿुधाया, फनकारनि गीत चया ऐं शाइरनि सिंध जे कल्चर रहणी करणी ते शेर पढ़ी धरती के भेटा पेश कई। अॼुकल्ह नंढी या टई मोबाइल ते घणो थो हुजे, असीं उनखे चओ मोबाइल तो घटि ॾियो, जेको तो मच कचेरी तौज ॾियो, सुठा दोस्त आहिनि, सुठा भाइर आहिनि, मोहबतूं पहिरायो, ओताकू क़ाइमु कयो, सुठनि दोस्तनि खे मानियूं खारायो, चांहियूं पियारियो, जंहिंमें सिंधी सखावत आहे। सिंध मड़ जी जल सां मोहबत धरती सां कयूं, पंहिंजी टोपी अजरक पटको इहो हिकिड़ो सिंध जी सखावत आहे ऐं सिंध जी इज़त बि आहे, नालो आहे, शान आहे, मान। असांजे पासे हिते फ़न वारा माण्हू या शाइर बिल्कुलु मौजूदु आहिनि ऐं अहिड़ियूं कचहरियूं अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि। जीअं की असांखे ख़बर आहे हिन दौर जदीद में असां वटि उस्ताद बुखारी आहे या शेख अयाज़ आहे, उहे वॾा शाइर थी गुज़रिया आहिनि, इन ॻाल्हि में को बि शक न आहे। बहितरीन दोस्तनि जो प्रोग्राम जेको रखियो आहे, अलहमदिल्ला हर साल प्रोग्राम थींदा रहंदा। दोस्तनि खे बि गुज़ारिश आहे ॿिया दोस्त बि रखनि प्रोग्राम। हीअ पंहिंजी सिंध जी सकाफ़त आहे। ॾाढो मज़ो पियो अचे, सिंध जी सकाफ़त आहे, इंशाल्लाह इन कचहरी खे वधाईंदा रहंदासीं। असांजी दिलि ईअं चवंदी आहे त इहे कचहरियूं थियणु खपनि। इन कचहरियुनि खां असांखे शौर वधंदो असांजो। असांजी नंढी टई आहे जेका उनखे इन ॻाल्हि जी सुध न आहे, छो त या बैत आहे या लतीफ़ आहे, सचल साईं आहे, जेके बुज़ुर्ग दरवेश शाइर आहिनि, इन शाइरनि जी ॿोली पढ़ी वेंदी आहे त उन्हनि मंझि माण्हुनि खे शौर मिलंदो आहे, मोहबत प्यार अमन भाईचारी आहे। नाज़रीन, दुनिया में मुख़्तलिफ़ ख़ूबसूरत पखी मौजूद आहिनि। कुछ शिकारी पखियुनि खे छॾे बाक़ी पखी कद जे हिसाब सां त नंढा हुजनि था, पर संदन आवाज़ ऐं ख़ूबसूरत रंग माण्हुनि खे मुतासिर करे छॾींदो आहे। वधीक तफ़सील कंबर मां इख़लाक़ अहमद चांडियो जी हिन रिपोर्ट में। हूअं त कुदरत वारे हर जानवर खे उन जी क्वालिटी जे मुताबिक़ ख़ूबसूरत ठाहियो आहे, पर दुनिया में मुख़्तलिफ़ ख़ूबसूरत पखी मौजूदु आहिनि। कुझु शिकारी पखियुनि खे छॾे करे बाक़ी पखी क़द जे हिसाब सां नंढा हूंदा आहिनि। उन सां गॾोगॾु हिननि पखियुनि जे आवाज़ ऐं ख़ूबसूरत रंग माण्हुनि खे मुतासिर कनि था। ईअं ई वुड डक हिकु नंढी ख़ूबसूरत बिदक पंहिंजी मासूमियत जे करे पूरी दुनिया में मशहूरु आहे। हिन बिदक जूं अखियूं ॻाढ़ियूं हूंदियूं आहिनि ऐं पेट ते अछो रंग जूं डाढ़ूं थींदियूं आहिनि। हिन जी चूंब चोटी अधु अछी ऐं अधु कारे रंग जी थींदी आहे। उहा बिदक सभ खां वधीक शुमाली अमेरिका में हूंदियूं आहिनि। अव्हां खे ॿुधी करे उहा बि हैरानगी थींदी त हीअ बिदकूं ज़्यादा पाणीअ में न पर वणनि ते रहंदियूं आहिनि। उन लाइ हिन बिदक जो नालो वुड डक रखियो वियो आहे। ही बोमीन वेक्सोविंग हिन पखीअ जा वार मथे खां सिधा मथे थियल आहिनि, जेके हिन पखीअ जी ख़ूबसूरतीअ खे चार चंड लॻाइनि था। हिननि पखियुनि जो आवाज़ तमामु सुठो हूंदो आहे। जॾहिं त ही पखी पाण में गॾु वेहंदा आहिनि त पंहिंजी ॿोलीअ में सांग तमामु बहितरीनु ॻाईंदा आहिनि ऐं उन लाइ हिननि खे सांग बर्ड जे नाले सां बि सुञातो वञे थो। ही पखी दुनिया जो 8हों ख़ूबसूरत पखी सम्झो वेंदो आहे। बिलूची ख़ूबसूरत ॾिसंदड़ ही पखी ॿियनि पखियुनि जी कापी करे सघे थो। हिन खे ॿिए कंहिं बि शिकारी पखीअ खां ख़तरो हूंदो आहे त ही पखी बांज़ जो आवाज़ कढी उन खे ड्रुजाए छॾींदो आहे। हिन पखीअ जी लंबाई 9 खां 12 इंच हूंदी आहे। हिननि पखीअ जे परनि ते मुख़्तलिफ़ रंगनि जी ख़ूबसूरती चार चंड लॻाए छॾींदी आहे। एटलेटिक पफन ही कैनेडा या यूनाइटेड स्टेट्स में रहंदड़ सी बैग बर्ड। एटलेटिक पफन खे ॾिसी करे अव्हां हैरान रहिजी वेंदा। कुदरत वारे हिन पखीअ खे वधीक ई ख़ूबसूरत ठाहियो आहे। हिन खे सामुंडी तोतो बि चयो वञे थो। हिन तोते जे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी चूंब ख़ूबसूरत हूंदी आहे ऐं हीउ तोतो पाणीअ में अंदरि ॿाहिरि पंहिंजे परनि जी मदद सां तरी सघंदा आहिनि। दुनिया जे ख़ूबसूरत पखियुनि मां हिकु ख़ूबसूरत पखी मोर, जेको नीरे रंग जो ख़ूबसूरत परनि सां ही अञा वधीक ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। हिन जी ख़ूबसूरती जे करे घणे क़दुरु माण्हू हिननि खे पंहिंजे घरनि में रखंदा आहिनि। जॾहिं मोर पंहिंजे परनि खे खोलींदा आहिनि त निज़ारो ॾिसण वटां हूंदो आहे। फ्लेमिंगो जी लंबाई 3 खां 4 फुट, हिन जो वज़न 3 खां 4 किलो हूंदो आहे। ही पखी अंटार्कटिक खे छॾे करे बाक़ी पूरी दुनिया में हूंदा आहिनि। ही पखी हर साल सिर्फ़ु हिकु अंडो ॾींदा आहिनि ऐं गुलाबी रंग में ही पखी जॾहिं उड़ंदा आहिनि त ख़ूबसूरत लॻंदा आहिनि। हिन तोते जी वॾी चूंब हिन जी ख़ूबसूरती में वधीक इज़ाफ़ो करे थी।
तो माण्हू घर में रखणु पसंदि कंदा आहिनि। सोनारी तितिर ही एतिरो ख़ूबसूरत तितिर हूंदो आहे जेको माण्हू हिन खे पहिरें दफ़े में ॾिसी करे पकिड़े पंहिंजे घर में कैद करे छॾींदा। पखी 42 इंच डिघो हूंदो आहे। ही तितिर सभ खां वधीक चेना में हूंदा आहिनि। अगरि ही पखी सोनारी तितिर अव्हां खे सुठो लॻे थो त हिन जी रक़म ॿुधी छॾियो। तितिर $1000 खां $5000 ताईं मिलंदो आहे। हिननि पखियुनि समेत ॿिया केतिरा ई दुनिया में पखी मौजूद आहिनि। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ चयो आहे त चौधरी शुजात हमेशा मुफ़ाहिमत ऐं रवादारी जी सियासत कई आहे। लाहौर में निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ अॻूणे वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन सां मुलाक़ात कई। हुन दौरान मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कई वई। कराची वठी हलंदासीं। पीपी अफगान निसार खोड़ो मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे कि वो गैर हाजिर रहकर अपनी पार्टी की कुव्वत को भी उसने डावोडोल कर दिया। और लोग तो अब आज़ाद हैं, वोट देने के लिए हर एक आज़ाद होता है और उसका नतीजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा अगर उसको वहाँ सपोर्ट हासिल नहीं रही। अल्लाह करेगा हमारे टिकट के फैसले भी अनाउंस हो जाएंगे चारों सूबों में। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क के अवाम जो है मुल्क के मालिक बने और जमहूरियत फिर से राइज हो, आइन फिर से बहाल हो। और ये सब कुछ जो कुछ है, मैं आपके साथ सिर्फ ये 2-4 बातें करनी थी। जाहिर है आपके कुछ सवाल होंगे, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। सिर्फ इत्तेहाद अभी बना नहीं, न PMLN से इत्तेहाद फाइनल हुआ, न JUI से हुआ है, न GDA से हुआ है। आपस में मिलते रहे ज़रूर हैं, जो अखबारों में रोज़ाना में खबरें मिलती हैं। इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान अभी हुआ नहीं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि किस पॉइंट पे तुम इत्तेहाद बना रहे हो। और वो सिंध में बन रहा है, ठीक है। और सिंध जज्बाती है, सिंध की डिवीजन पर सिंध जज्बाती है, NFC पर जज्बाती है, देहात को ताना देना उस पर जज्बाती है। ये सारी जो चीज़ें तासुब फैलाने के लिहाज से फैलाई जा रही हैं, इस पर सिंध का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। तो मेरा सवाल उन जमातों से है कि वो किस पॉइंट पे बन रहे हैं। रही बात, हमने अभी तक यही फैसला है कि हम अपने तौर पर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से चलेंगे और हम आवाम पर एतमाद करते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब के उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। हम इस तरह से उनसे डायरेक्ट राब्ता बहाल रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, कोई और हो। जी सर, ये जो आपने बताया था इलेक्शन की डेट आगे बढ़ जाती है, तो क्या आप कबूल कर लेंगे डेट आगे? मैंने दूसरा भी ले लीजिए कि जब PDM की हुकूमत की अगर आप KPK में और पंजाब में वक्त में इंतखाबात करवा देते, आप इत्तेहादी हुकूमत में थे, तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ते। मैं अर्ज करूँ, पहला सवाल आपका था क्या करेंगे, क्या कबूल कर लेंगे डेट आगे बढ़ी तो? आई एम सॉरी, नहीं, क्या इलेक्शन की डेट आगे बढ़ी तो क्या कबूल कर लेंगे? मैंने पहले ही कहा कि हम इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आपने शायद सुना, मैंने कहा कि हम इस एक्सटेंशन ऑफ डेट की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये मुल्क चाहिए, इसलिए हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। रही बात दूसरी कौन सी कि हमने पहले क्यों नहीं इख्तियार किए, मैं उसमें इमरान खान की इस साजिश को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश करार देता हूँ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने के बाद जनरल मुशर्रफ वाला काम क्यों किया कि असेंबली को डिसॉल्व करवाया, अपने ही चीफ मिनिस्टर से डिसॉल्व कराने का हुक्म दे दिया। KP में
तो ऐसा कोई सूरत हाल ही नहीं थी कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े या कुछ करे। ठीक है, हाँ ठीक है। एक तो ये बात थी। तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद इलेक्शन एक दिन कराने का फैसला करवाया था। ये फैसला 90 के दिहाई से हुआ। उससे पहले इलेक्शंस हमेशा पहले नेशनल असेंबली के होते थे और 3-4 दिन के बाद सूबों के होते थे। अब ये फैसले जो थे, एक इलेक्शन का नतीजा दूसरी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, तभी हमने जद्दोजहद करके ये कहा था कि अब इलेक्शंस अगर हों तो 1 डे पोल हो। हमने इलेक्शन के इस किताब और रूल और एक्ट में भी कुछ न कुछ इस तरह का लिखा है कि जी 1 डे पोल का तस्वर ये हमने वहां लिखवाया था और अभी भी लागू है। उस वक्त हमारा इतराज यही था कि ये एक जगह इलेक्शन कराने का दूसरे सूबों पर असर पड़ सकता है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती बात। इलेक्शन की जो तरीक़ेकार है वो 1 डे पोल हो। हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है नहीं। वैसे तो इंडिया में महीनों चलते हैं इलेक्शंस, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उस पर सवाल नहीं उठता। लेकिन हमारे यहाँ जब भी देखो, एक दफा हुआ किसी ने नारा लगा दिया, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। ये सही सिलसिले ऐसे बनते रहे कि जिसमें असरअंदाज हो रहे थे एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पर। इसलिए हमने ये कहा था कि एक तो इमरान खान का वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना एक गलत कदम था। वो अवाम की बेइज्जती थी। वो अवाम की बेइज्जती थी कि जो चुन के असेंबली में बैठे थे उनसे उनका इख्तियार छीना। चाहे अपोजिशन में हो तब भी आवाज होता है, चाहे हुकूमत में हो तब भी आवाज होता है, लेकिन है ये हाउस लोगों का। अब लोगों से इख्तियार छिनवा गया, अपोजिशन से छिनवाया गया, किसी से भी छिनवाया गया। हम इस चीज को नामुनासिब समझते हैं और इमरान खान ने खुद भी इसको मान ही लिया कि जब वो इस्तीफा देने के बाद नेशनल असेंबली से वापस आना चाहता था। पहले हम रोकते रहे थे कि इस्तीफा मत दो, लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया तो वो फिर भागते आ रहे थे कि जी हमें इस नेशनल असेंबली में आने दो। यानी इमरान खान वो फैसला भी गलत, पंजाब का फैसला भी गलत, KPK का भी फैसला गलत। और बात तभी बनती है जब सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हों। इसलिए हमने मुखालफत की थी। सर ये साईं ने पहले एक मिनट साईं, मैं साईं का सवाल सुन लूं। जी इंतखाबात की डेट ना बढ़े और ये ना बढ़े, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है इन जमातों में या नहीं, या वो रोज खत्म हो चुका है एक आइंदा इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन? दूसरी बात सर, देखें आप मैं इसका जवाब दे दूं। आप खुदारा हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? नहीं 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 पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम है। अवाम को हम ताकत का सरचश्मा मानते हैं और हमारी इन सारी कोशिशों, हमारे इन सारे बयानात की वजह से ये भी तो हुआ ना कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी को गाली दी इमरान ने। जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो इमरान ने कहा ये तो जानवर है। हमने तो वेलकम किया था। हमने वेलकम किया था कि जी हां, अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी की जो मुखालिफ जमात थी वो पीपुल्स पार्टी नहीं थी, PTI थी। साफ उन्होंने कह दिया था कि ये तो ऐसे जानवर होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को न लाएं, 26 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। ये मुल्क इस वक्त अवाम के पास नहीं है। आइन में सिर्फ 3 महीने थे निगरान हुकूमत के लिए, अब 6 महीने होने को आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का अवाम, उसके पास ये नहीं है। अनइलेक्टेड लोग हैं, बैठे हैं, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो या न दे रहे हो, लेकिन बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, जिसको भी कामयाबी मिले हम मान लेंगे। इलेक्शन सिर्फ साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट कराओ, उस पर यह इल्जाम न लगे कि जी इस तरह हुआ है। अब ये अगर इससे ज्यादा मैं क्या कहूं,
जी सर। फारूक सत्तार की जानिब से कल टीवी प्रोग्राम के अंदर दावा किया गया है कि हमने पीपल्स पार्टी को भी कराची में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दावत दी है, तो क्या पीपल्स पार्टी दावत को कबूल करेगी? सर हमें दावत मिली नहीं। अभी आपने प्रोग्राम फजल रहमान के हवाले से बात की कि उन्होंने जो है वो इंतखाबात के को मुलतवी करने की बात की है, तो उनकी ताज़ा मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में खासकर जरदारी साहब के साथ हुई है, तो क्या उनके साथ भी वो उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने ये बात की है, क्या क्या उनके साथ भी? सर मैं सिर्फ शादी में मिले होंगे, ठीक है, मिलते हैं, मैं भी आपसे मिलता हूं, वो भी मिल सकते हैं किसी से, वो बतना नहीं है। हाँ, बात होती है कि सरे राह चलते हुए हाथ मिलाते हुए मुलाकात नहीं कहलाती या मुज़ाकरात नहीं कहलाती, मुज़ाकरात नहीं कहलाती। हम इलेक्शन चाहते हैं, ये मेरा जायज़ मुतालबा है कि पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर निर्णय है कि कब तक इलेक्शन को नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने तौर पर अपने आप को साबित करने का पाबंद है कि जी इलेक्शन हो, भले किसको भी इख्तिदार मिले, कोई मसला नहीं है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई कैटास्ट्रफी नहीं आई, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई। ये अमन अमान के मसले दूसरे ममालिक में भी होते हैं। ऐसे अमल थे, याद होगा आपको, ईरान में नहीं हुए, वहां तो 3-2 साल में इलेक्शंस हुए, हालात ठीक न होते हुए भी। तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इस चीज का रखती हैं इल्म के कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिंध में भी कहते हैं ना जी धाड़े लें धाड़े लें धाड़े लें, हम तो नहीं कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मत कराओ। थैंक यू। मैं समझता हूं कि बिलावल साहब के वो 10 पॉइंट डूएबल है, प्रैक्टिकल है। डूएबल इसलिए कह रहा हूं कि मैं इमरान खान की तरह बात नहीं कर रहा हूं कि जी इतने लाखों घर बनाऊंगा, इतने लाखें रोजगार दूंगा। तरीका नहीं बताया था कि कहां से करेगा, अभी तक नहीं बताया कि कितने किए और कैसे किए। लेकिन अगर हेल्थ कार्ड चल सकता है तो लेबर कार्ड भी चल सकता है और दूसरी चीजें भी जो कही हैं वो चल सकती हैं। हारी कार्ड, लेबर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सब तरीके हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट हो। कार्ड देने का मतलब ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो हम अनाउंस कर देंगे कि जी फलां को ये देंगे, मरात दे देंगे, ये है। तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो भी डूएबल है कि हर साल अगर 15% बनती हैं तो पीपुल्स पार्टी ने तो अपने दौर में 150% तनख्वाहें बढ़ाई थी 2008 में। ये डूएबल चीजें हैं जो बिलावल साहब ने अपने हाइलाइट्स किए सारे कुछ इसमें। और ठीक है, अब सोलर एनर्जी की बात हुई। सोलर एनर्जी कमर्शलाइज हो चुकी है। मैं हर गांव में सोलर के प्लांट लगाता हूं। खर्च तो अवाम के पैसे होंगे ना, अवाम टैक्स देता है, उससे पैसे खर्च होते हैं। प्रायोरिटी बनाएंगे सोलराइज करने की। गांव में अगर सोलराइज लग गया, शहरों में सोलराइज लग गया, 300 यूनिट की हद रख दी। ये डूएबल चीजें हैं जो अवाम को चाहिए। कोई सहूलत, उनकी जिंदगी कुछ आसान हो, ये चाहिए। अनाज के लिए, ज़राअत के लिए कार्ड क्यों? क्योंकि हारियों को अगर कार्ड होगा, हो सकता है उस कार्ड की वजह से वो फर्टिलाइजर ले सकें या उनको कुछ मराहत मिल सके। मैं समझता हूं वो तो डूएबल है। दूसरा सवाल पता नहीं क्या था सर। हाँ, कैंडिडेट का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को कैंडिडेट से टिकट मांगना है 13 जनवरी को। जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी, ये ट्रिब्यूनल अपना काम पूरा कर देगा, फाइनल लिस्ट लगे कि ये जी अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर उनसे मांगी जाएगी कि टिकट है आपके पास, तो हम आपको पीपुल्स पार्टी का लिखें या किसी और पार्टी का लिखें। वो डेट है 12 या 13 तारीख। अब 13 तारीख में वो टिकटें अनाउंस हो चुकी होंगी, जो जाके
सिंबल अलॉट हो गया। सिंबल अलॉट हो। आपने कहा कि हमारे मंशूर में किसान कार्ड है, मजदूर कार्ड है। गुज़श्ता 15 सालों में से आज के दिन तक किसान को आज जो है वो खाद नहीं मिल रही है, ब्रेक किट नहीं मिल रही है। तो आप किसान कार्ड तो दूर की बात रही, खाद के हवाले से आज आबादकार और जो किसान है परेशान है। इसके लिए पीपल्स पार्टी ने क्या है वो? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। उसका मैं सबूत भी दे सकता हूं कि हमने आमदनी कैसे बढ़ाई। जब 2008 का जमाना आया था तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ गया था चला, वहां गंदम की फी मन की कीमत थी 500 रुपए, हमने उसको बढ़ाए 800 किया पहले दफा। उस 8 साल की वजह से लोगों ने काश्तकारी में इजाफा कर दिया। पहले हम गंदम बाहर से मंगाते थे, फिर 2008 के बाद हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट से भी फायदा ही होता है, कमाई होती है, बेहतर अगर रकम मिलती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है ज़राअत में वो कुछ ना कुछ रिकवर होती है। इसी तरह से जब ये मैनिफेस्टो आएगा, किताबचा आएगा, उसमें भी लिखा हुआ तरीका होगा कि हारियों को इस कार्ड के हासिल करने से कैसे कैसे फ़वाइद मिलेंगे, किस तरह से फ़वाइद मिलेंगे। कर्जा लेना है उसके भी लिखा होगा। हर चीज़ की डिटेल जो आएगी वो तो उस किताबचे में आएगी। फिलहाल तो बिलावल साहब ने एक खदो खाल बताया कि आगे 5 साल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलता है, लोग उसको जितवाते हैं, तो ये काम कर सकेंगे। जी नाज़रीन, कराची में पीपी अखबार निसार अहमद खोड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। नचण होत नून लीग सिंध के नायब सदर शेख जावेद मीर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कई है। इलेक्शन में देर की हिमायत न कंदासीं। JYGDA ऐं नून लीग से इताद अञा नाहे थियो। नाज़रीन, ही हुई हिन वक्त ताईं जो ख़बरूं। वधी ख़बरनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए टीवी के मशहूर डॉक्टर रिजवान ला रहे हैं एक मुनफरिद शो, जिसका नाम है कॉफी विद डॉक्टर रिजवान, और वो भी सिर्फ और सिर्फ धरती टीवी पर, जिसे आप लाइव देख सकते हैं रोजाना दिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और आप इसे रिपीट भी देख सकते हैं रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक। इस खूबसूरत से प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवान आपको बताएंगे कि आप मोटापे से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, दुबलेपन का इलाज, खून की कमी, काली और सांवली रंगत,
और सेहत से मुताल्लिक तमाम मसाइल और उनका हल। तो देखना मत भूलिए कॉफी विद डॉक्टर रिजवान, दिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक लाइव और रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक रिपीट। कॉफी विद डॉक्टर रिजवान सिर्फ और सिर्फ धरती टीवी पर। पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर रिजवान इस शो में आपको बताएंगे आपकी जिस्मानी बीमारियों का हल और खूबसूरत जवान सेहतमंद रहने का राज, वो भी आपके किचन और फ्रिज में रखी हुई चीजों से। तो देखते रहिए रोजाना डॉक्टर रिजवान के घरेलू टोटके, दिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक और रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ धरती टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आया हूँ जी होस्ट सरवर जबीन, प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार एहसास यादुनि सां आहे, ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां, तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा में। हिन प्रोग्राम में आहे अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत जी ज़िंदगीअ जो हर पहलू। असीं मुलाक़ात कराईंदासीं अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत सां। असीं हूंदासीं अव्हां सां, अव्हांजे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरती जा सितारा में। इन हेडलाइन लाए असां 57 कयो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62 पर नैब तहत ताहियात नाइलिया केस जी ॿुधणी ख़मीस ताईं मुलतवी। मामूली सबबनि जी बुनियाद ते ताहियात नाइलिया गैर मुनासिब नथी लॻे। क़त्ल क़दारी जहिड़नि संगी ॾोहनि में कुझु अरसे बाद इलेक्शन विड़ी सघिजे थो। आइन में हर ससा जो मुदो आहे त पोइ नाइलिया ताहियात कीअं थींदी। जस्टिस मंसूर अली शाह जा रिमार्क्स। ताहियात नाइलिया जी तशरीह वारे फ़ैसिले जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे इस्तदा। तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे? इलेक्शन एक्ट हलणु घुरिजे या सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो? चीफ जस्टिस कासिफ फाइसी साहब जो अटॉर्नी जनरल का सवाल। असां इलेक्शन एक्ट जी तायद करियूं था छाकाणि त इहो वफ़ाक़ जो ठाहियल कानून आहे। अटॉर्नी जनरल जो जवाब। समूरन एडवोकेट जनरल्स इलेक्शन एक्ट में तरमीम जी हिमायत करे छॾी। लगे तो चूंडू रोकण लाइ टैक्साट इस्तेमाल कया पिया वञनि। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस कासिफ फाइसी साहब जा PK91 जे रिटर्निंग ऑफिसरनि खे पेशावर हाई कोर्ट खां मुअत्तल करण ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जी अपील ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस चयो आहे त इलेक्शन कमीशन को बि गैर कानूनी या गैर आइनी क़दम नाहे खयो। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर ते स्क्रूटनी जो अमल शुरू करे। असीं सम्झूं था त हर इदारे खे पंहिंजी हदनि में रहणु घुरिजे। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसी साहब जा सुप्रीम कोर्ट में गुम थियल माण्हुनि ऐं जबरी गुमशुदगियुनि जी केस में ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस जो चवणु आहे त गुम थियल माण्हुनि जे केस खे सियासी मक़सद लाइ इस्तेमालु करणु न ॾिनो वेंदो। हीउ केस संजीदा नोईअ जो आहे। हू अदालत जो मज़ाक़ बणाइण जी इजाज़त न ॾींदा। गुम थियल माण्हुनि जो मसइलो उन वक़्तु हल थींदो जॾहिं सभु ज़िम्मेवारियूं निभाइनि।
$70 करोड़ जी किस्त लाइ पाकिस्तान जी IMF के समूरनि शर्तनि ते अमल करण जी ख़ातिरी। नाणे वारी वफ़ाक़ी वज़ारत जी निगरान वज़ीर डॉक्टर शमशाद अख्तर ऐं स्टेट बैंक जी गवर्नर IMF खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हुकूमती इख़्तियारनि जो IMF जे सभिनी शर्तनि ते अमल करण जे अज़म जो इज़हार। IMF जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड 11 जनवरी ते वाशिंगटन DC में घुरायल इजलास में पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते वीचार कंदो। अगुणे सदरासी पुलिस सरदारी सां नासिर शाह जी मुलाक़ात में मुल्की सियासी सूरत हाल ते ख़यालनि जी ॾेवट। नासिर शाह आसिफ अली सरदारी के सख डिवीज़न में चूंड सरगर्मियों बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। इस्लामकोट वेझो 16 वरियनि जी नीगरीअ जो फाहो ॾिनल लाश हथ। कौशल्या मेघवार जो वण में टंगियल लाश मिलियो। पुलिस लाश कढाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। हैदराबाद में हिरासत जो शिकार समाजी वर्कर कशिश ख्वाजा जी SSP अमजद शेख सां मुलाक़ात। कशिश ख्वाजा SSP के पंहिंजे मसइलनि खां आगाह कयो। अमजद शेख ह्यूमन राइट्स सेल इंचार्ज के मामले जी इंक्वायरी करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत करे छॾी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भली कार आऊं मारवी थई ऐं आऊं आहियां दुआ भुट्टो। नाज़रीन हेडलाइंस मां ॾिठियूं। हिते अहम ख़बर आहे, अवां खे आगाह कंदासीं। अगुड़े सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह जे अगुड़े सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे। नासिर हुसैन शाह आसिफ अली ज़रदारी के सखर डिवीज़न में हलंदड़ चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी। सैयद नासिर हुसैन शाह चयो आहे त पीपल्स पार्टी ईंदड़ आम चूंडुनि में सिंध समेत समूरे मुल्क में कामयाब थींदी। मुलाक़ात बाबति अवां खे ख़बर ॾियूं पिया। अगुणे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जी अगुणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे। नासिर शाह आसिफ अली ज़रदारी के सख डिवीज़न में हलंदड़ चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी आहे। नासिर हुसैन शाह जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी ईंदड़ आम चूंडनि में सिंध समेत समूरे मुल्क में कामयाबी माणींदी। अवां खे मुलाक़ात बाबति ख़बर ॾियूं पिया। अगुणे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जी अगुणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे। नासिर शाह आसिफ अली ज़रदारी के सख डिवीज़न में हलंदड़ चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी। ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। अगुड़े सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह जी अगुड़े सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे। नासिर हुसैन शाह आसिफ अली ज़रदारी के सखर डिवीज़न में हलंदड़ चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी। सैयद नासिर हुसैन शाह चयो आहे त पीपल्स पार्टी ईंदड़ आम चूंडुनि में सिंध समेत समूरे मुल्क में कामयाबी माणींदी। अवां खे आगाह कयूं पिया। अगुणे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जी अगुणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे। नासिर शाह आसिफ अली ज़रदारी के सखर डिवीज़न में हलंदड़ चूंड सरगर्मियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी आहे। नाज़रीन ही हुई हुन वक्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरनि जी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग
मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। जहाँ ममता वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। जहाँ ममता वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए का। अरे ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का बाहर जिते जिते वहीदा अबड़ो जो आवाज़ ॿुधो वञे थो, जिते जिते असांजो धरती टीवी ॾिठो वञे थो, उन्हनि सभिनी खे असां चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद भली कार। ऐं जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो, ऐं ख़ुशियूं जेको आहे विरहाईंदा रहो। ख़ुशियूं हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकी तव्हां जेतिरी विरहाईंदो उहा वधंदी वेंदी आहे। ऐं ॾुख जेको हूंदो आहे, जेकॾहिं तव्हां उनखे घटाइण जी कोशिशि कंदा त घटिजी वेंदो आहे। घणा माण्हू हिकिड़ो जेको आहे सो कोशिशि घटि कंदा आहिनि ऐं ॾुख में घणो रहंदा आहिनि, परेशानियुनि में घणो रहंदा आहिनि। सो बहरहाल अॼु जेको आहे ॻाल्हाईंदासीं, टॉपिक आहे अॼु जो टॉपिक इहो आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे असां लिखंदा त सही आहियूं पर माना ग़लति थी वेंदो आहे, त उहो कहिड़ो लफ़्ज़ आहे। सो ईअं ई ॾिसंदासीं जेके बि असांजा कॉलर आहिनि उहो असांखे इन जो छा जवाबु ॾियनि था, ऐं उन्हनि खां इहो बि पुछंदासीं त ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे। ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। ख़ूबसूरत ज़िंदगीअ में ख़ूबसूरत लम्हात जेके आहिनि उहे ॾाढा अहम हूंदा आहिनि, ऐं असां पंहिंजी ज़िंदगी खे जेतिरो पुरसुकून गुज़ारण जी कोशिशि कंदा आहियूं ओतिरी ज़िंदगी असांजी ईज़ी थी वेंदी आहे। ऐं ख़ूबसूरत ज़िंदगी में ख़ूबसूरत माण्हुनि जो हुजण बि ज़रूरी आहे। ऐं जेकॾहिं को माण्हू तव्हांजी ज़िंदगी में ख़ूबसूरत आहे त पोइ कोशिशि कंदा कयो त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि जी क़दुरु कयो। छो त क़दुरु करण सां ई चवंदा आहिनि त जेकॾहिं को बि अहिड़ो रिश्तो हूंदो आहे जेसीं ताईं असां हुनजी क़दुरु न कंदा आहियूं त उहो रिश्तो हमेशह असां सां क़ाइमु न रही सघंदो आहे। सो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिड़ा आहिनि आप? ठीक है, मां ठीकु आहियां मिठी, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत कीअं आहे? नालो छा आहे अव्हांजो? जी मां समीना बि ॻाल्हायां हैदराबाद खां। कीअं आहियो समीना? अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रियो? अच्छा, सभ खां पहिरियां जॾहिं निंड मां उथियो त छा कयो तव्हां? इहो ई बुआई कढी था त हा छा कयो? घर जो कमकार। अच्छा, घर जो कमकार। सुम्हण उथण खां पहिरियां छा कंदा आहियो? उथण खां पहिरियां कलमो पढ़ंदा आहियूं। जी? हेलो, छा कंदा आहियो? मुंहिंजे पहिरियां त कलमो पढ़ंदा आहियूं। उथण खां पहिरियां त निंड कंदासीं न, सुम्हिया पिया हूंदासीं। अच्छा, कुझु ॿुधाईंदो राणी? हेलो हेलो। अच्छा, कॉल कटिजी वई। ऐं जेको आहे मां त तव्हां सां मज़ाक कई मिठी। मज़ाक जेकी आहे उहा करणु खपे। त उथण खां पहिरियां त असां निंड कंदासीं न, सुम्हिया पिया हूंदासीं, वरी पोइ उथंदासीं। ऐं जीअं असां उथूं था त इहा त ॾाढी बहितरीनु ॻाल्हि कई त उथण सां तव्हांखे कलमो ज़रूरु पढ़णु खपे। सो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, केरु पिया ॻाल्हायो? दरगाह सखी जाम दातार खां हाफ़िज़ परवेज़ अली थी। माशाअल्लाह, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अवांजी दुआऊं ख़ुशि आहियो? अवांजी पूरी टीम ख़ुशि आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, असांखे तव्हांजी दुआऊं आहिनि। ठीकु आहियूं। छा ॿुधाईंदव? जी, तव्हां जेको सुवालु आहे हुन जो जवाबु आहे त लफ़्ज़ जेको लिखंदासीं ग़लति, भले लिखूं सही त ग़लति ई थींदो। पोइ छा थींदो?
जेको तव्हां चयो न जेको अखर लिखंदा त माना ग़लति सही लिखंदा त ग़लति थियंदा, माना लफ़्ज़ ग़लति लिखंदासीं त अखर सही त हूंदा पर लफ़्ज़ माना ग़लति ई पढ़बा। पोइ उहो लफ़्ज़ कहिड़ो आहे, माना कहिड़ो चओ था? हाणे मिसाल पाण अखरनि में लिखंदा त ग़लति, उहो ग़लति ई पढ़बो न। अच्छा चलो ठीकु आहे, कुझु ॿुधाईंदव तव्हां? हा तव्हांखे थोरो गीत जो ॻाए ॿुधाईंदासीं। जी ॿुधायो। मां पखी हाँ प्यार जो, प्यार जे इज़हार जो, धार जो न मार जो मूंखे, धार जो न मार जो। मां पखी हाँ प्यार जो, प्यार जे इज़हार जो, धार जो न मार जो मूंखे, धार जो न मार जो। जी वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख्याल रखो। जेके ॾिसनि पिया सभिनी खे सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। ऐं ज़बरदस्त जेको आहे शाइरी आहे ऐं ज़बरदस्त जेके ॿोल आहिनि, त ईअं ई जेके बि असांजा कॉलर आहिनि उन्हनि खां इहो ई पुछंदासीं त उहो कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेके असां लिखंदा त सही आहियूं पर पोइ बि ग़लति थी वेंदो आहे। सो ॾिसंदासीं त उन्हनि मां जेको आहे कंहिंजो जवाबु सही थो वञे ऐं कंहिंजो जवाबु ग़लति थो वञे। ऐं जेकॾहिं जवाबु नथो अचे बि को मसइलो न आहे, थींदो रहंदो आहे, इंसानु आहे भई। ग़लती जेको आहे सो चवंदा आहिनि त जेसीं ताईं तव्हां पंहिंजी ग़लतियुनि मां पाण न सिखंदव त ज़िंदगी में कामयाबु न थी सघंदव। सो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो अली, ठीकु आहियो? क्लास अल्लाह ताला शुक्र पंतन पाक जो महिरबानी। माशाअल्लाह। छा चवणु चाहींदव अली? असांजो सवाल ॿुधो आहे तव्हां? जी न। सवाल इहो आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेके असां लिखंदा त सही आहियूं पर पोइ बि ग़लति थी वेंदी आहे? लिखंदा सही आहियूं त बि ग़लति थी वेंदी आहे, मतिलबु असां हुनखे सही लिखण जी कोशिशि बि कंदा आहियूं पर ग़लति थी वेंदी आहे। न भाऊ न आयो जवाब। अच्छा कुझु जी कुझु ॿुधाईंदो? गानो जी ॿुधायो। दोस्तनि जा नाला खणूं। गोलेवार शहजादपुर खां हाजी शरीफ, बक्सी नवाब कोसो कुबे सईद खान खां वॾा गोसाऊं को ॾाढो चांडियो, कंबर खां जबगुल बलोच रेलवे स्टेशन कंबर खां जुनेद बिड़ोस्ता जुनल मस्तूरी ऐं सरहाड़ी शहर खां मामन छुटल ज़रदारी। कलो को गानो रहियल ॿुधायां तो काल कटिजी वई। अच्छा हलो ठीकु आहे। मूं ॾे नेण न खण, मूं ॾे नेण न खण, दुनिया ॾाढी साड़ोली ॾींदई कान ॾिसण, मूं ॾे नेण न खण, मूं ॾे नेण न खण। सूरत तुंहिंजी ॾाढी सुठी आ, मुहबत तुंहिंजी यार मिठी आ, माखीअ साण मखण, माखीअ साण मखण, मूं ॾे नेण न खण, मूं ॾे नेण न खण, मूं ॾे नेण न खण, मूं ॾे नेण न खण। अदा कल्ह त इहो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां पूरो ॿुधायो असांखे। ॿुधायो ॿ लाइन भाउ अधु ॿुधायो, हुते हुते वरी काल कटिजी वई, बैलेंस ख़तम थी वियो। अच्छा ख़तम थी वियो। अच्छा ठीकु आहे, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, वॾी महिरबानी। ऐं हिते ई ख़ूबसूरत सॉन्ग जो टाइम थी वियो आहे, जल्दी ईंदासीं जल्दी वापसि ईंदासीं। ॾिसंदा रहो। गुड इवनिंग। सिंगार दिल तो असांजी कई बेकरार, बाह जो जवानिया तुझी दिल रुबा, सुह जी निशानिया मुझी दिल रुबा। छात कया थी सोरह सिंगार दिल
जवानिया तुझी दिल रुबा सुहागी निशानिया मुझी दिल रुबा पंजी दिल में दिया जानी जायो दिल चाहे थी दिल भर दिल में माँ बताए लिखायो नजर मता कह जी लगई हुस्न जिरानिया मुझी दिल रुबा जहिड़ो मिलियो यार मूंखे चए याकूब खोसो तो आहे दिनो प्यार मूंखे तोखे ॾिसी ख़ुशि हा घणो सोहणी वॾी साणिया मुंहिंजी दिल रुबा सुहागी निशानिया मुझी दिल रुबा छात कया थी सोरह सिंगार दिल तो असांजी कई बेकरार वह जो जवानिया तुझी दिल रुबा सुहागी निशानिया मुझी दिल रुबा सुहागी निशानिया दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। वाह वाह ज़बरदस्त सॉन्ग ऐं ज़बरदस्त सॉन्ग सां गॾु जेके बि असां सुठा कॉलर जेके सही सही जवाब ॾियनि था वरी केरु सही जवाब नथा ॾियनि बि ख़ैरु आहे को मसइलो न आहे ईअं ई जेको आहे तव्हां असांजे शो में हिसो थियो था इहा बि तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। कुझु माण्हू बसि सलाम करण जे लाइ बि शो में कॉल कंदा आहिनि त बसि असां ॾिठोसीं ऐं सोचियोसीं त तव्हांखे सलाम कयोसीं। कॉलर मौजूदु कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। टीवी जो वॉल्यूम घटि कजो। जी वॉल्यूम घटि आहे बिल्कुल सफ़ा घटि आहे बिल्कुल घटि आहे। अस्सलाम वालेकुम अजी ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम मां ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह जो। तव्हां ख़ुशि आहियो? ख़ैरियत आहे? जी शो में कॉल तव्हांजी लॻी आहे छा चवणु चाहींदव? असां इहो चवणु चाहींदासीं त तव्हां जेको सवाल कयो आहे उहो असांखे सम्झ में न आयो। तव्हांखे सम्झ में न आयो? अच्छा भला हिकिड़ो सवाल इहो ॿुधायो त दुनिया में सभ खां वधीक जेके खजूर आहिनि उहे कहिड़े मुल्क में थींदा आहिनि? अच्छा दुनिया में या पाकिस्तान में? दुनिया में सॼी दुनिया में सभ खां वधीक खजूर जेके आहिनि उहे कहिड़े मुल्क में थींदा आहिनि? अॼु दुनिया जी मूंखे ख़बर त कान्हे पर पाकिस्तान में मां चवंदमि त सभ खां वधीक खजूर खैरपुर में थींदा आहिनि। अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हां कुझु ॿुधाईंदव असांखे? अभी मां त कुझु नथो ॿुधाए सघां बाक़ी मां तव्हां खां ॿुधणु चाहींदुमि शमन अली मीराड़ी जो गानो। ठीकु आहे थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ऐं खोड़ सारा माण्हू जेके आहिनि उहे सवाल हिकु त मां सवाल इहो पुछो त उहो कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेके असां लिखंदा त सही आहियूं पर पोइ बि अलाए छो ग़लति थी वेंदो आहे। जेकॾहिं इहो सवाल जो जवाबु अचे थो तव्हांखे
त तव्हां ॿुधायो या वरी पोइ तव्हां सुवाल मूंखे इहो ॿुधायो त दुनिया सॼी दुनिया में खजूर जेके आहिनि उहे कहिड़े मुल्क में घणा थींदा आहिनि? सो ॾिसंदासीं त भला भई ठीकु आहे, भई 2 सुवाल आहिनि, ॿिन्हिनि मां तव्हांखे कहिड़ो जवाबु अचे थो त ॾिसंदासीं त जेके बि असांजा कॉलर आहिनि उन्हनि मां केरु सही जवाबु ॾिए थो या न। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी केरु पिया ॻाल्हायो? हाफ़िज़ मदर सिंधी गेबी देरे खां बाजी। हा हा जी बाजी कहिड़ो हाल आहे? ख़ुशि आहियो? जी मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? ख़ैर तव्हां शुक्र आहे, अमन फरातूं बाजी। छा चवणु चाहींदव शो में? का ख़ासि ॻाल्हि तव्हांखे को मैसेज ॾियणो हुजे कंहिंखे? मैसेज बसि अलाह ख़ैर कंदो। मैसेज इहो आहे मुंहिंजो सभिनी जे लाइ त जेको आहे त हिन मौसम में ॿाहिरि माण्हू निकिरे त एहतियात सां निकिरे, न त कोशिशि करे त माण्हू घर में ई रहे त बहितर आहे। जो सियारे जी मौसम थी हले पई। अच्छा, कॾहिं कंहिं कर्ज़ वरितो आहे तव्हां खां? कर्ज़ मूंखां त कंहिं हिकिया त वरितो हूंदो, बाक़ी मां घणनि खे वरितो आहे। तव्हां सभिनी खां वरितो आहे छो? इहो इन जे लाइ त ॾींदासीं त वठंदासीं बि न। कॾहिं कॾहिं कर्ज़ाई जेके आहिनि कर्ज़ मोटाए न ॾींदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि बाबा हाणे अलाह की मनो कर्ज़ ॾियो असांखे, महिरबानी कयो। ईअं असां कॾहिं कंहिंखे बि कोन चयो जेके मोटाए न ॾिनो त बाबा बिस्मिल्लाह अलाह ख़ैर कंदो, बसि हाणे नथो थियो त अलाह कुझु कंदो। अच्छा ठीकु आहे। अच्छा, दुनिया में सभ खां वधीक खजूर कहिड़े मुल्क में थींदा आहिनि? वधीक खजूर मुंहिंजे ख्याल में त UAE जी साइड थींदा आहिनि, इहो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में? मुंहिंजे ख्याल में ईअं। बाक़ी जे शहर जो था पुछा कयो त ख़ैरपुर में वधीक थींदा आहिनि। ख़ैरपुर त सभिनी खे यादि आहे त ख़ैरपुर में घणा थींदा आहिनि, पर ख़ैरपुर खां वधीक मतिलबु कहिड़े मुल्क में थींदा आहिनि? अच्छा, कुझु ॿुधाईंदव तव्हां? ॿियो कुझु ॿुधाईंदव? शेरो शाइरी सॉन्ग वग़ैरह? हा, सॉन्ग जे लाइ कोशिशि कयां थो। कोशिशि कयो था? कोशिशि कयां थो त हज़ार माण्हू हज़ार मेहणा मिलनि था मूंखे पवनि था सहिणा, ही हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां, रही थो मूंखां परे वो सुहिणा। हज़ार माण्हू हज़ार मेहणा मिलनि था मूंखे पवनि था सहिणा। बाजी तव्हांजे आवाज़ मां लॻे थो तव्हांखे घणा आहिनि ॾुख? ॾुख हाणे अलाह न ॾींदो। तव्हांजे आवाज़ में वॾो दर्द आहे, तव्हांजे आवाज़ में ॿुधो मां त तव्हांखे ॾाढा ॾुख आहिनि। सो वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ऐं हज़ार माण्हू हज़ार ॻाल्हियूं, ऐं ॻाल्हियूं जॾहिं घणियूं थी वेंदियूं आहिनि त पोइ माण्हू वरी कुझु बर्दाश्त करे सघंदो आहे, कुझु वरी न करे सघंदो आहे। पर ईअं आहे त कुझु जेकॾहिं असांजे अंदरि में बर्दाश्त हुजे त शायदि असांजा ॾाढा रिश्ता जेके ॾाढा सुठा रिश्ता आहिनि उहे असांजा कामयाबु वञनि। बसि इहे रिश्ता जेके असांजा टुटंदा आहिनि उहे असांजी बर्दाश्त न करण जे करे टुटंदा आहिनि। सो कॉलर मौजूद आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा कहिड़ो हाल आहे? मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? टीवी जो वॉल्यूम घटि कजो। हा हा, फतेह मोहम्मद पियो ॻाल्हायां तव्हांजो बाबा। जी 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 कीअं आहियो तव्हां? तबियत कीअं आहे तव्हांजी? ठीकु आहियो? हा, अलाह जी महिरबानी, दुआ लॻी पई आहे। माशाअल्लाह। अॼु पुटु अहिड़ो गानो ॿुधायो अथई जो असांखे त जवानी बि अचे। सुठी ॻाल्हि आहे न, यादूं ताज़ियूं हुजनि। गाना ॿुधाईंदे जी बाबा, पोइ असां बि जवान थी वेंदासीं पोड़ा। सुठी ॻाल्हि आहे, जवान रहो। जी जी महिरबानी, थैंक यू। अल्लाह साईं वरी बि अहिड़ो सुठो गानो ॿुधायो त दिलि ख़ुशि थिए। ज़रूरु ज़रूरु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ऐं ईअं ई ज़बरदस्त जेके बि असांजा धरती टीवी ते जेके बि सॉन्ग हूंदा आहिनि, असां कोशिशि कंदा आहियूं त उहे सभु सॉन्ग तव्हांजी फरमाइश मुताबिक़ हलायूं। ज़ाहिर आहे हिकिड़े कलाक जो प्रोग्राम आहे ऐं हिकु कलाक में चवंदा आहियूं, कोशिशि हूंदी आहे असांजी त जेके स्क्रीन ते असांखे ॾिसनि था उहे बोर न थियनि, ईअं न सोचनि त बाबा हाणे वही था भला हाणे कॾहिं घर वेंदी, छा आहे भला तंग कयो अथई। सो कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांजी जेकी बि तव्हांजी फरमाइश आहे या तव्हांजी मूड मुताबिक़ घणा माण्हू जेके आहिनि सो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केरु पिया ॻाल्हायो?
चंदनलाल कीअं आहियो कराची तव्हां? का जी जी कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? फर्स्ट क्लास लाल। अच्छा टीवी जो वॉल्यूम त घटि कजो, महिरबानी थींदी तव्हांजी। ओहो कॉल ई कटिजी वई। जॾहिं बि कंहिं बि शो में कॉल कयो त टीवी जो वॉल्यूम घटि कंदा कयो, उनजे करे तव्हांजी आवाज़ जेको आहे उहो कटिजी वेंदी आहे ऐं पोइ वरी आख़िर में तव्हांजी कॉल बि कटिजी वेंदी आहे। सो बहरहाल ईअं ई जेके बि असांजा कॉलर आहिनि उन्हनि खां इहो ई सुवाल कंदासीं त उहो कहिड़ो मुल्क आहे जंहिंमें सभ खां वधीक खजूर थींदा आहिनि। सो हाणे कोई चए थो ख़ैरपुर में घणा थींदा आहिनि। सो कॉलर पुछंदो, कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरु पिया ॻाल्हायो? अली नवाज़ जो हैदराबाद खां। जी अली कीअं आहियो? छा चवणु चाहींदो? अल्लाह जा सन शुक्र आहे मालिक जो। तव्हां ॿुधायो थी ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। छा चवणु चाहींदो? शो में कॉल लगी आहे तव्हांजी। हा शो में इहो चवणु चाहींदासीं त नाइट जो प्रोग्राम बि बहितर हुयो, हाणे बि आहे। असांजी वरी बि गुज़ारिश इहा आहे त टाइम थोरो वधायो वञे त महिरबानी थींदी। ज़रूरु ज़रूरु वधाईंदासीं, टाइम ज़रूरु वधाईंदासीं। अच्छा हिकिड़ो सवाल पुछो मां, उहो तव्हां ॿुधो? हा रिपीट कयो। सवाल इहो आहे त दुनिया में सभ खां वधीक खजूर कहिड़े मुल्क में हूंदा आहिनि? दुनिया में वधीक त सभिनी खां मां सम्झां थो त सऊदी अरब में